Hi guys, what's up? Hi guys, what's up? Welcome back. Welcome to Unacademy. So this is our fourth session of the day, and in this session we will be completing PharmacEasy का जो sum up session है CNS का. So we'll be completing that thing, right? Wait for a few seconds. Let me just check that we are live or not, or the video and the audio quality are good enough, or so finally we are live now, and let's start. Mm, wait. Yeah, so we are live. We are live. Hi guys. So this is our fourth session of the day. So today we have done four sessions, right? Still, we are on the fourth session. We have already completed the three sessions, right? So first session के अंदर we have completed the sedative hypnotics. After that we have started with the sum up, but कुछ error हो गया था, so laptop जो है वो अपने आप क्रैश हो गया, पता नहीं क्या हुआ था, कुछ समझ नहीं आया था. तो इसके अंदर हमारा लगभग 20% CNS कवर हुआ था. एंड देन फिर हमने एमसीक्यू शेड्यूल्ड था. तो एमसीक्यू का फर्स्ट सेशन सीएनएस वाला दैट वाज ऑलरेडी शेड्यूल्ड. सो मैंने कहा आप चेंज नहीं करते, इसी को ही कैरी ऑन करते हैं और हम सम अप वाली को 9 बजे कंटिन्यू कर लेंगे. सो वी आर हियर. तो दिस इज आवर सम अप पार्ट 2. जनरली इसका पार्ट 2 नहीं होने वाला था बिकॉज सम अप एक ही क्लास में खत्म होने वाला था, बट क्या करें, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, टेक्निकल इश्यूज बहुत थे. सो दैट्स व्हाई हमने दूसरा सम अप का प्लानिंग करी, शेड्यूल करा अर्जेंट, राइट? एंड वी आर हियर गाइस. सो वेलकम टू अन अकेडमी. वेलकम बैक. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. एंड yeah, so why an academy is preferred? An academy is the best online learning platform because कैमरा कुछ ज्यादा ही ऊपर हो गया. Yeah, now it's fine, I hope. Uh, why an academy is preferred? Because it provides the quality content, best strategy, and the top level of educators, right? तो इन तीनों चीज़ों की वजह से अन अकेडमी इज प्रेफर्ड. कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, कोई भी ऑफलाइन प्लेटफॉर्म ये चीज़ नहीं दे सकता. दे कैन प्रोवाइड यू कंटेंट, but they cannot provide you all the three things at the same time, right? So here we provide you these three things at the same time. And if you want to install the Unacademy app, then you can search Unacademy or Unacademy Learning app on the App Store or the Play Store. So from there you can get it installed. And guys, अगर आप plus subscription लेते हो, then you can get the benefit of the live classes, live tests, and live quizzes, batch courses, structured schedule, right? But अगर आप plus subscription नहीं भी लेते, then also you are benefited because there are live special classes that are going on 24 into 7, right, on each and every topic. And on the live special class you can ask your doubts, and आपके डाउट वहीं पर उसी टाइम पर क्लियर हो जाएंगे. एंड दैट्स व्हाई इट फील्स लाइक same as face to face classes. And we are having iconic subscription as well. So Unacademy has collaborated with the Prep Ladder, and in this you get benefit of the Unacademy के जो live classes है, live test है, live quizzes है, batch courses है, structured schedule का है. ये सब का benefit तो होता ही है, but Prep Ladder के साथ आपको इन सब चीजों के साथ आपको प्रेप लैडर की प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, क्यू बैंक, रैपिड रिवीजन कोर्स एंड हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे, राइट? सो इफ यू आर सेकेंड और थर्ड ईयर मेडिको, then you have to select iconic. I prescribe this course to you, right? And if you want to buy, then you can use the code VIRMANI, and you can get 10% discount, 10% instant discount. And you can choose
the time span as 12 months, 18 months, 24 months, 36 months, right? And you can get the 10% off, right? And yeah, so you get benefit of these things, and आप plus subscription भी purchase कर सकते हो, and for that also you have to use the code VIRMANI only, right? And you'll be getting 10% off. And let's continue with the sum up session. तो सम अप सेशन के अंदर हमने एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स डिस्कस कर लिए थे, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हमने डिस्कस कर लिए थे, एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स भी हमने डिस्कस कर लिए थे, एंड हमने स्टार्ट करा था मूड डिसऑर्डर्स और एंटी साइकोटिक्स, राइट? So we'll be continuing from the antipsychotics only, right? Uh, so let's jump to the antipsychotic drugs. I hope ये सब आपको clear हो गया था. अगर कुछ doubts हैं तो you can ask. Yeah. So guys, there are two types of mental illnesses. One is psychosis, another is neurosis. Psychosis के अंदर reality is lost. तो basically psychosis के अंदर जो patient होगा उसको पता नहीं होगा कि उसके साथ क्या चल रहा है, right? So there can be mania, there can be depression, there can be manic depressive psychosis and bipolar disorder. तो ये सब disorders के अंदर patient को उसकी reality loss हो जाती है. पेशेंट को पता नहीं होता कि उसके साथ क्या चल रहा है, राइट? अगर आपको पेपर की एंजाइटी है तो आपको पता होगा कि आपको एंजाइटी है, पेपर की टेंशन है, तो आपको पता होगा. सो रियलिटी इज नॉट लॉस्ट हियर न्यूरोसिस के अंदर, बट एट द सेम टाइम साइकोसिस के अंदर क्या होता है, रियलिटी इज लॉस्ट. सो देयर इज परमानेंट डैमेज बेसिकली. तो क्या होता है इसके अंदर, आपको पेशेंट को पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं पता होता अपना, राइट? सो इस दैट्स व्हाई काउंसलिंग इसके अंदर बेनिफिट नहीं कर सकती, राइट? काउंसलिंग बेनिफिट नहीं कर सकती बिकॉज पेशेंट डज नॉट नो इट्स पॉजिटिव और द नेगेटिव, राइट? मेनिया पे पेशेंट है मान लो, तो एग्रेसिव होगा, एजिटेशन शो करेगा, इरिटेशन शो करेगा, इधर उधर चीजें फेंकेगा, तो उसको नहीं पता. डिप्रेशन में पेशेंट है तो पेशेंट डिप्रेशन के अंदर है, उसको पता नहीं होगा कि ही और शी इज डिप्रेस्ड, उसको लगेगा कि शी इज और ही इज नॉर्मल. तभी वो वहां से बाहर नहीं आ पाते बिकॉज उनको अपना पॉजिटिव और उनको अपना नेगेटिव नहीं समझ में आ पाता, और दैट्स वाई काउंसलिंग भी वहां काम नहीं कर सकती, राइट? बट एट द अदर थिंग, अगर रिएक्टिव डिप्रेशन है, लाइक एग्जाम की वजह से है, किसी और थिंग की वजह से है, तो रिएक्टिव डिप्रेशन के अंदर पेशेंट नोज इज पॉजिटिव और नेगेटिव. तो इन दिस थिंग काउंसलिंग इज द फर्स्ट लाइन ऑफ द ट्रीटमेंट. तो हमें काउंसलिंग करनी है उस पेशेंट की, राइट? So this is the first basically इसका first treatment plan is counseling, right? Because patient know what is wrong, what is right, what is his positive and what is his negative, right? तो तभी counseling benefit हो सकती है, और यहाँ पर counseling कर देंगे तो ये चीज depression में convert नहीं होगी, right? So और बेसिकली न्यूरोसिस के अंदर रियलिटी इज नॉट लॉस्ट. एंजाइटी, फोबिक स्टेट्स, बेसिकली आपको पता होगा कि आपको पानी में जाने से डर लग रहा है, आपको आग से डर लगता है, राइट? ये सब चीजें आपको पता होंगी. सो रियलिटी इज नॉट लॉस्ट. ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, तो किसी को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है तो उसको पता होगा कि उसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, बार बार हाथ धोने की उसको दिक्कत है, परेशानी है. ही और शी इज अफ्रेड दैट उसको बैक्टीरिया के इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, दैट्स व्हाई वो बार बार हाथ धोएगा, राइट? बुलीमिया, लाइक कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा मोटे हैं, मोटे हैं, मोटे हैं, मोटे हैं, और जनरली वो पतले होते हैं और वो खाना छोड़ देते हैं. या कई बार ऐसी ड्रग्स आती हैं, कई बार ऐसी कुछ ड्रग्स हैं जो कि क्या करती हैं कि what you like you will eat and after that you will be having that drug. So वो ड्रग की वजह से वॉमिटिंग इंड्यूस होगी और सारा का सारा जो भी आपने खाना खाया वो वॉमिटिंग से बाहर आ जाएगा. तो उससे क्या होगा, आपकी जीभ को जो आपको क्रेविंग हो रही थी वो तो फुलफिल हो जाएगी, बट आप बॉडी के अंदर नहीं डाल रहे. सो दिस इज अ कंडीशन ऑफ बुलीमिया. पेशेंट को पता होगा कि उसको ये कंडीशन है, राइट? और इसके अंदर भी व्हाट इज प्रिस्क्राइब्ड काउंसलिंग. सो ये न्यूरोसिस के अंदर फर्स्ट लाइन ऑफ द ट्रीटमेंट इज काउंसलिंग. तो हमें ड्रग्स इतनी जल्दी स्टार्ट नहीं करनी, बट साइकोसिस के अंदर यू हैव टू स्टार्ट विद द ड्रग्स, राइट? आफ्टर दैट पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, बेसिकली ट्रॉमा के बाद देयर इज जनरली अ एंजाइटी और स्ट्रेस डिसऑर्डर,
राइट, कि पेशेंट को लगता है ट्रॉमा कभी ठीक नहीं हो सकता, प्रॉब्लम है, तो ऐसी सबकी कंडीशंस हैं। तो ये चीज हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे, बट नाउ इट्स द टाइम टू डिस्कस द साइजोफ्रेनिया और साइकोसिस. So basically this is the condition in which dopamine is increased, right? There is increase in the dopamine, right? Dopamine is seriously increased, right? Treatment is, what is the treatment? So antipsychotic drugs, these are the drugs having salutary therapeutic effect in psychosis, right? So typical and atypical, there are two types of drugs. Typical ones are there that only blocks the D2 receptors, right? But जो atypical वाले हैं वो D2 के साथ साथ ब्लॉक करते हैं सेरोटोनिन को, 5-HT2 को, बट पोटेंटली 5-HT2 को ही ब्लॉक करते हैं, D2 को नहीं इतना ज्यादा करते. सो मेन मैकेनिज्म है 5-HT2. टिपिकल के अंदर टिपिकल के अंदर D2 blocker is there and atypical के अंदर some other mechanism can be there, right? And most commonly 5-HT2 antagonist is there and there can be weak D2 blocking action as well, right? तो टिपिकल ड्रग्स के अंदर वी आर हैविंग हेलोपेरिडोल, ट्राइफ्लूपेरिडोल, फ्लूफेनाजिन, क्लोरप्रोमाजिन, थायोरिडाजिन, थायोथिक्सिन, क्लोरप्रोथिक्सिन. These are the seven drugs. So haloperidol, trifluperidol, flufenazine, they are strong D2 receptor blockers. Chlorpromazine, thioridazine, they are weak D2 receptor blocker. Thiothiixin, chlorprothiixin, they are intermediate D2 receptor blocker, right? एटिपिकल की अगर हम बात करें तो क्लोजापिन, ओलेंजापिन, क्यूटापिन, एसेनापिन, जोटेपिन, रिस्पेरिडोन, पैलिपेरिडोन, इलोपेरिडोन, रिप्रासिडोन एंड लूरासिडोन. These are the 10 drugs that basically blocks that are antagonist on the serotonin 5-HT2 receptor, right? And plus they are also having weak D2 blocking action, but main mechanism is serotonin blocking. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टिपिकल के अंदर ड्रग्स आर हेलोपेरिडोल, ट्राइफ्लूपेरिडोल, फ्लूफेनाजिन, क्लोरप्रोमाजिन, थायोरिडाजिन, थायोथिक्सिन, क्लोरप्रोथिक्सिन. After that, clozapine, olanzapine, quetiapine, asenapine, zoltepin, risperidone, paliperidone, iloperidone, riprasidone and lurasidone. तो जिसके अंदर भी बेसिकली इसके अंदर ऐसा कुछ निमोनिक मैं नहीं रेडी कर पाया, बट ये सब याद हो जाती हैं. एक बार आप 10 बार इसको रीड करोगे उसके बाद लिख के देखोगे, याद हो जाएगी. And now it's the time to discuss the typical antipsychotic. खोल के पढ़ते हैं इनको. So basically they slow the movement, they slow the action, right? So positive to the thought, psychomotor slowing is there, emotional quietening is there, reduction in initiation, and extra pyramidal symptoms are there. Extra pyramidal symptoms का मतलब akathisia, dyskinesia, tardive dyskinesia and parkinsonism. So these are the एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, राइट? सो जैसे कि हमने बात करी थी, साइकोटिक ड्रग्स कैन कॉज पार्किंसोनियन एंड एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स कैन कॉज साइकोसिस, राइट? एंड न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम, right? So typical antipsychotic drug is also a neuroleptic drug because it can cause neuroleptic syndrome. And psychotic की अगर हम बात करें, it reduces the irrational behavior, aggression and agitation and hyperactivity, hallucination, delusions. तो psychosis के अंदर basically it reduces the irrational behavior, aggression, agitation, hyperactivity, hallucination and delusions, right? Right. तो टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स के अंदर हमने बात करी कि एक्शन इज देयर, CNS एक्शन इज बेसिकली, अगर नॉन साइकोटिक के अंदर दोगे देन व्हाट विल बी द इफेक्ट? सो पॉजिटिव टू द थॉट, साइकोमोटर स्लोइंग, इमोशनल क्वाइटनिंग, रिडक्शन इन इनिशिएशन, एक्स्ट्रा पिरामिडल मोटर साइड इफेक्ट्स, न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम, राइट? बट अगर आप साइकोटिक के अंदर दोगे तो इट रिड्यूसेस द इरेशनल बिहेवियर, एग्रेशन एंड एजिटेशन ऑफ द पेशेंट, इट डिक्रीजेस द हाइपर एक्टिविटी, इट डिक्रीजेस द हेलुसिनेशंस एंड इट डिक्रीजेस द डिल्यूशंस, राइट? तो ये सब चीजों को डिक्रीज कर देगा, राइट? एंड आफ्टर दैट देखो हमने बात कर ली कि नॉन साइकोटिक अगर नॉर्मल पेशेंट के अंदर देंगे तो ये सब सिम्टम्स आएंगे, एंड अगर पेशेंट साइकोसिस के पेशेंट के अंदर देंगे तो ये सब सिम्टम्स वो सबसाइड कर देगा, राइट? And significant for the chlorpromazine की अगर हम बात करें, so basically it decreases the seizure threshold and it can precipitate the seizure, it can precipitate the seizures. And loss of temperature regulation on the higher doses, it blocks the D2 and thus it blocks the CTZ, thus it is also having the antiemetic action. Potent local anesthetic action is also produced, and you know that where D2 is blocked, prolactin will increase.
राइट, जहां पर भी D2 ब्लॉक होगा वहां पर प्रोलैक्टिन इंक्रीज हो जाएगा। तो हेयर D2 विल बी ब्लॉक्ड एंड प्रोलैक्टिन इंक्रीज हो जाएगा। तो ये चीज हम हॉर्मोन्स में देखेंगे अच्छे से। तो देयर इज इंक्रीज इन द प्रोलैक्टिन रिलीज, राइट, हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया भी हो सकता है, एंड इट डिप्रेसेस द हार्ट एज वेल, राइट, बाय ब्लॉकिंग द बीटा वन, राइट, बीटा वन को ब्लॉक करने की वजह से इट कैन डिप्रेस द हार्ट एज वेल। एंड ड्रग्स की अगर हम बात करें तो वी आर हैविंग हेलोपेरिडोल, ट्राइफ्लूपेरिडोल, फ्लूफेनाजीन, ट्राइफ्लूफेनाजीन, थायोरिडाजीन एंड ट्राइफ्लूप्रोमाजीन। सो हेलोपेरिडोल के बारे में बात करते हैं। सो इट इज मोस्ट कॉमनली यूज टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग। एंड ट्रीटमेंट की बात करें तो बेसिकली इट इज यूज्ड फॉर इंडिकेट इट इज इंडिकेटेड फॉर acute schizophrenia, Huntington's disease, Gilles-de la Tourette syndrome, and plasma T half life is 24 hours, and it is less alliptogenic. Chlorpromazine was highly alliptogenic, but it is less alliptogenic, and it does not cause weight gain as well, right? इतना ज्यादा वेट गेन भी नहीं होता, राइट। सो ट्राइफ्लूपेरिड्रोल के अंदर मोर पोटेंट देन हेलोपेरिडोल, फ्लूफेनाजीन एंड ट्राइफ्लूफेनाजीन हाई पोटेंसी, right, and less alliptogenic, does not cause hypotension, sedation, and it is indicated for uncooperative psychotic patient, right. So haloperidol is indicated for the acute schizophrenia, Huntington's disease, Guillain-de la Tourette syndrome, and trifluperidol is more potent than haloperidol, so ये भी इन्हीं के लिए indicated है, but potency बढ़ जाती है, right. फ्लूफेनाजीन और ट्राइफ्लूफेनाजीन हायर पोटेंसी की है, लेस एलिप्टोजेनिक है, डज नॉट कॉज हाइपोटेंशन एंड सेडेशन, एंड इट इज इंडिकेटेड फॉर द अनकोऑपरेटिव साइकोटिक्स। थायोरिडाजिन की अगर हम बात करें तो लोअर पोटेंसी, मार्क्ड सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक एक्शन इज देयर, साइड इफेक्ट इज एक्स्ट्रा पिरामिडल, कार्डियक एरिथमिया एंड सेक्सुअल फंक्शंस इंटरफेरेंस एज वेल, राइट, एंड मेल के अंदर इट इज मोर प्रेवलेंट। ट्राइफ्लूप्रोमाजीन की अगर हम बात करें तो इट इज मेनली एज एंटी एमेटिक ड्रग, and the side effect is acute muscle dystonia in the children, right. So triflupromazine can cause acute muscle dystonia, right, in the children. And side effects की अगर हम बात करें, मेन टोटल साइड इफेक्ट्स की अगर हम बात करें हर एक एंटीसाइकोटिक्स की, देन दे कैन प्रोड्यूस एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, and first of all is dystonia, akathisia, parkinsonism, tardive dyskinesia and malignant neuroleptic syndrome, right. So सारी की सारी antipsychotic drugs can cause these type of disorders, right. Dystonia, akathisia, parkinsonism, tardive dyskinesia, malignant neuroleptic syndrome. But the earliest manifestation that is seen is dystonia, and the most common manifestation that is seen is akathisia, right. And after that, Parkinsonism, tardive dyskinesia, and malignant neuroleptic syndromes are also seen. So what? So with the antipsychotic drugs, you have to give the treatment of these side effects as well. So side effects जो आते हैं, first of all, benzhexol is the central anticholinergic and it is beneficial for curing the dystonia, Parkinsonism, akathisia, malignant neuroleptic syndrome. But it is contraindicated in tardive dyskinesia, राइट। सो साइड इफेक्ट्स क्या है, बेंजेक्सोल, साइड इफेक्ट्स आर दीज थिंग्स एंड इनका ट्रीटमेंट इज अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, एंड द फर्स्ट ड्रग दैट वी विल यूज इज बेंजेक्सोल, right, and dystonia, parkinsonism, akathisia, malignant neuroleptic syndrome, right. But benzoxazole is contraindicated in tardive dyskinesia. For tardive dyskinesia you have to use volbenazine. Volbenazine is VM82 inhibitor. एंड प्रोपेनोलॉल की अगर हम बात करें, प्रोपेनोलॉल की अगर हम बात करें तो एकाथीसिया, it is the drug of choice for akathisia, propanolol, and dantrolene is the drug of choice for malignant neuroleptic syndrome. So we have talked about the benzoxazole, we have talked about the valbenazine, we have talked about the propanolol, we have talked about the dantrolene. And the second effect that is produced, that the second side effect that can be produced with by the antipsychotics are hyperprolactinemia. Basically जैसे मैंने आपको कहा कि where D2 is blocked there would be increase in the prolactin, and where D2 is stimulated then there would be decrease in prolactin, so they are inversely proportional. तो अगर D2 बढ़ेगा तो what will happen, D2 अगर बढ़ा then there would be डिक्रीज इन प्रोलैक्टिन, जहां पर D2 और डोपामिन डिक्रीज होगा वहां प्रोलैक्टिन इंक्रीज होगा, राइट।
So here D2 is blocked, so there would be increase in prolactin, and so hyperprolactinemia can be produced. Then third की अगर हम बात करें तो acetylcholine is blocked basically. So there is dryness of mouth, blurring of vision, right, and urinary retention as well. Urinary retention as well, right? And alpha blocking की वजह से there would be decrease in BP. H1 blocking की वजह से there would be sedation as well. And it decreases the seizure threshold, so it can precipitate the seizures as well. So हमने पहले बात कर लिया एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स की, that are dystonia, akathisia, parkinsonism, malignant neuroleptic syndrome, right? आफ्टर दैट हमने हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया की बात कर ली, देन हमने एसीएच ब्लॉकिंग की बात कर ली, देन हमने H1 ब्लॉकिंग की बात कर ली, अल्फा 1 ब्लॉकिंग की बात कर ली, देन हमने प्रेसिपिटेशन ऑफ द सीजर की बात कर ली, राइट? एंड नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स. सो बेसिकली एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स के अंदर वी विल नॉट बी सीइंग दीज इफेक्ट्स बिकॉज देयर वुड बी वीक D2 ब्लॉकिंग एक्शन. सो जो भी अभी पहले एक्शंस प्रोड्यूस हो रहे थे दैट वाज बिकॉज ऑफ D2 ब्लॉकिंग, राइट? Here D2 is not blocked so potently. So atypical antipsychotics there would be lesser side effects. Drugs की अगर हम बात करें तो clozapine, quetiapine, risperidone, ziprasidone, pimavanserin and aripiprazole. तो clozapine की अगर हम बात करें it is indicated for the resistant schizophrenia. It is the drug of choice for the resistant schizophrenia. Sedation is produced basically H1 due to H1 blocking. अल्फा ब्लॉकिंग भी होता है एंड इट ब्लॉक्स द अल्फा 1, राइट? सो बीपी is also decreased. 5-HT2 blocking is also seen and D2 blocking is also seen, but D2 blocking is weak. So basically जो भी symptoms थे वो नहीं आएंगे D2 blocking की वजह से. Metabolic complication can also be seen like weight gain, hyperlipidemia and diabetes mellitus precipitation. Then you can see sedation, siluria, granulocytosis, seizures, and myocarditis as well. And with the Qtapin के साथ cataract is more common. So Qtapin के साथ cataract is mostly seen, right? Cataract, right? Risperidone के साथ maximum D2 blocking property is seen, extrapyramidal symptoms, and they increase the lactic acid as well. Ziprasidone causes prolongation of the QT interval. Torsades the point is, right? Ziprasidone can increase the QT interval and thus it can cause torsades the point is, right? And pimavanserin blocks the 5-HT2 receptor and approved for the Parkinsonism induced mental anomalies like psychosis. Pimavanserin it blocks the 5-HT2 receptor and it is approved for the Parkinsonism induced mental anomalies like psychosis. राइट. सो और एरिपिप्राजोल इज यूनिक ड्रग. जैसे कि वहां पर हमने बात करी थी लेकोसामाइड की, दैट वाज यूनिक. यहाँ पर एरिपिप्राजोल इज यूनिक. इट इज पार्शियल एगोनिस्ट ऑन द D2 and 5-HT1A receptor, but it is antagonist on the 5-HT2 receptor, right? So aripiprazole is partial agonist on the D2 and 5-HT1A receptor, but it is antagonist on the 5-HT2, right? So that's why this is a unique drug, aripiprazole. So अब एंटीसाइकोटिक्स का मेन यूजेस जो है दैट इज बेसिकली साइकोसिस के लिए मेन यूजेस टू ट्रीट द साइकोसिस, राइट? And it can be used as antiemetic as well because we have seen that it blocks the CTZ because it blocks the D2 receptor potently, or other weak D2 blocking where then also some antiemetic property is produced, right? So and the second thing is anti-manic. So basically mania में भी use हो सकता है. Up to that psychosis में तो use होता ही है. Then Huntington's chorea, right? Chorea, Huntington's chorea, but for the Huntington's chorea drug of choice is tetrabenazine, right? टिक डिसऑर्डर के अंदर गिले दे ला तोरॉथ सिंड्रोम इज बेसिकली टिक डिसऑर्डर, और गिले दे ला तोरॉथ सिंड्रोम के अंदर भी इट इज यूज, बट ड्रग ऑफ चॉइस इज अगेन टेट्राबेनाजीन. तो गाइस एंटी साइकोटिक ड्रग के इंडिकेशंस क्या क्या है? मेन इंडिकेशंस आर psychosis, for treatment of the psychosis, then for treatment of the mania, then for treatment of the MSs, but it is not generally used. MSs के लिए vomiting के लिए we are having antiemetic drugs like domperidone,
मेटोक्लोप्रोमाइड, ऑन्डेंसेट्रॉन एंड ऑल ऑफ दैट। सो हमारे पास काफी सारी ड्रग्स हैं एंटी एमेटिक, राइट, जो हमने जीआईटी में ऑलरेडी कवर कर ली है। जीआईटी वाली जो है वो ऐप पर प्रेजेंट है, अनअकैडमी की ऐप पर आप खोलोगे या गूगल पे सर्च करोगे फार्मैकिजी शिव विरमानी अनअकैडमी, मतलब कुछ भी सर्च कर लो, शिव विरमानी अनअकैडमी, फार्मैकिजी अनअकैडमी या शिव विरमानी सर्च कर लोगे तो भी तो चौथा पांचवा लिंक आ जाएगा, वहां जाके आप देख लेना गूगल पर। एंड मेनिया में भी ये ट्रीटमेंट होगा, मेनिया भी हम कवर करेंगे। कोरिया, हंटिंगटन कोरिया के अंदर भी इट इज यूज बट ड्रग ऑफ चॉइस इज टेट्राबेनाजीन, एंड गिले दिला सिंड्रोम के अंदर भी इट इज यूज बट द ड्रग ऑफ चॉइस इज टेट्राबेनाजीन, राइट। मूड डिसऑर्डर्स की अगर हम बात करें, देन then we will be covering here all these things, basically हमने already cover कर लिया but we are revising here. So mania के अंदर aggression, violent behavior, depression, bipolar disorder, right. So we anti manic drugs are there. So mania के अंदर basically क्या होता है, patient को irritable mood, reduced sleep, hyperactivity, uncontrolled thought and speech and violent behavior, राइट। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, बेसिकली क्या होता है कि मेनली आता है ड्यू टू द ओवर एक्टिविटी ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर्स इन द ब्रेन, ओवर एक्टिविटी, राइट। सो क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर आर स्टिमुलेटेड बाय द कैल्शियम channel, right, or calcium ion, right. So what is happening here, calcium G protein coupled receptor stimulate हुआ, GQ protein stimulate हुआ, then calcium का release बढ़ गया, right. GPCR, जो G protein coupled receptor है, that is stimulated, then GQ protein is stimulated, then there would be increased release of calcium, and thus जो PIP2 है, that will be converted to the IP3DAG in the brain, then IP3DAG with the help of phosphatase, IP3 एक P हट जाएगा and IP2 is formed, then again phosphatase comes and एक P ले जाएगा and IP is formed, then inositol, then phosphatidyl inositol, then एक P जुड़ेगा PIP, एक और P जुड़ेगा PIP2, एंड दस ये सब साइकिल चलती रहेगी। सो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। सो इसके अंदर जो मेन एंजाइम है जो आपको दिख रहा होगा, दैट इज फॉस्फेटेज। सो इवन इफ, सो बेसिकली क्या होता है, ये स्लो प्रोसेस होता है, फॉस्फेटेज इतना प्रेवलेंट नहीं होता जनरली, बट क्या होता है कई बार फॉस्फेटेज काफी ज्यादा प्रेवलेंट हो जाता है ब्रेन के अंदर। तो व्हाट विल बी हैपनिंग है, IP3DAG बना, देन इमीडिएटली वो इनोसिटॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, इमीडिएटली PIP2 बन जाएगा एंड इमीडिएटली ये प्रोसेस साइकिलिंग चालू रहेगी। So here we want to decrease the phosphatase. Here we want to inhibit the phosphatase. So how we are going to inhibit the phosphatase? So by lithium, right? Lithium is the drug that will inhibit the phosphatase, right? So drugs are first of all lithium carbonate, and we can also use the anticonvulsant drugs, and we can also use the atypical antipsychotics for the treatment of mania, right. So lithium की अगर हम बात करें, it is established as a standard anti-manic and mood stabilizing drug. Actions की अगर हम बात करें तो CNS actions has practically no acute effects, neither sedative nor euphoriant, but prolonged administration acts as mood stabilizer in bipolar disorder. Continued treatment prevents the cyclic mood changes. Right. Plasma concentration is acute mania के अंदर you have to give 0.8 to 1.2 milli equivalent per liter. Prophylaxis के लिए you have to give 0.5 to 0.8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। टॉक्सिक तब हो जाएगी जब आपने डोज इंक्रीज कर दी 2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से। if your dose is increased, if dose administered is more than 2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, then टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है, राइट। सो हमने यहाँ लिथियम की बात कर ली। तो दिस इज द मेन थिंग, राइट, अगर आपको समझना है तो। So lithium is the drug that is basically used, that decreases the phosphatase in the brain, and thus the cyclic process is slowed down, right. तो जो अभी हमने PIP2 वाला प्रोसेस देखा था वो स्लो डाउन हो जाएगा बिकॉज फॉस्फेटेज डिक्रीज करना, एंड दैट द बेस्ट ड्रग इज लिथियम, बट इसका थेरेपेटिक इंडेक्स इज रियली वेरी लो। सो आपको मॉनिटर करना पड़ता है कॉन्स्टेंटली लिथियम को, राइट। एक्शंस क्या है, practically no acute effect will be produced, no first dose response will be produced, right. Neither sedative nor euphoriant, but prolonged administration acts as a mood stabilizer in bipolar disorder. Basically it prevents the continuous, basically ये prevent करता है mood changes को,
जैसे सडनली कोई मेनिया में है, फिर वो डिप्रेशन में चला गया। सो ये जो कॉन्स्टेंटली मूवमेंट चलती रहती है ना, मूड में मूड चेंजेस चलते रहते हैं, ये प्रिवेंट कर देता है लिथियम, राइट। फार्माकोकाइनेटिक्स की अगर हम बात करें, वेल एब्जॉर्ब्ड ओरली, neither protein bound nor metabolized penetrates the brain. CSF concentration of lithium is half to that of plasma concentration. Right, excreted by the kidney same as Na plus. After single dose, urinary excretion is rapid, followed by a much slower phase. Right, on repeated medication, steady state concentration is achieved, and thus main response is produced. Right, so it is very well absorbed orally, neither protein bound nor metabolized. It can penetrate the brain easily. CSF concentration increase hoti hai, and it is half to that of the plasma concentration, and it is excreted through the kidney same as sodium. And after single dose, urinary excretion is rapid because फॉरेन सब्सटेंस है, और हमारी बॉडी को पता चल गया कि फॉरेन है, तो हमें इसको बहुत ही जल्दी निकालना है अपनी बॉडी से. सो दैट्स व्हाई after single dose, urinary excretion is rapid, and then after the prolonged administration, then excretion is slowed down, and on the repeated medication, steady state of the in the concentration is achieved. Yeah, so we have already discussed lithium का mechanism of action. We have already discussed. So phosphatase वाला था वो action, PIP2 वाला जो था. Should I explain it again, or it is fine? Please reply. We have already discussed it. शायद लास्ट टू लास्ट स्लाइड में था. तो गाइज एडवर्स इफेक्ट्स की अगर हम बात करें, सो लिथियम के एडवर्स इफेक्ट्स लिथियम से ही हम पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, लीकोसाइटोसिस, इंक्रीज ट्रेमर्स, हाइपोथायरॉयडिज्म, इंक्रीज यूरिन अवॉइडेड इन मदर्स. Right, so lithium can cause leukocytosis, it can increase the tremors, hypothyroidism, goiter, then increase in urine, polyuria and polydipsia, and avoided in mothers, right. And it can cause vomiting, nausea, diarrhea, and CNS toxicity, ataxia, giddiness, delirium, coma, convulsions. Right. Contraindication is sixth sinus syndrome. Reduction in T wave, SA, AV node is also depressed. Right. Sixth sinus syndrome के अंदर it is contraindicated. Absolute contraindication. Repeat please. Yeah. So एक बार repeat कर लेते हैं ये मेनिया का प्रोसेस. तो गाइस क्या होता है मेनिया के अंदर, देयर इज ओवर एक्टिविटी ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, राइट. अब आपको पता होगा कि न्यूरोट्रांसमीटर्स बनते कैसे हैं. न्यूरोट्रांसमीटर स्टिमुलेटेड बाय कैल्शियम चैनल्स, राइट. तो कैल्शियम की ओवर एक्टिविटी की वजह से जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर आर स्टिमुलेटेड. जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे तो जी क्यू प्रोटीन जो है वो फर्दर कैल्शियम रिलीज करेगा अपने अंदर. फर्दर कैल्शियम रिलीज अगर हुआ तो PIP2 से इट विल बी कन्वर्टेड टू IP3DAG, एंड हियर इज अ एंजाइम जिसकी वजह से फॉस्फेटेज इज द एंजाइम जिसकी वजह से एक फॉस्फेट ग्रुप इज रिमूव्ड, राइट. So IP3 की जगह IP2 is there, and another phosphatase comes and it extracts 1P, and thus from IP2 it gets converted to IP. Then inositol, then phosphatidyl inositol, then एक और P ऐड हो जाता है PIP, then एक और P ऐड हो जाता है PIP2. So पहले P निकल रहा है फिर P ऐड हो रहा है. So this is a cyclic process, right. इसके अंदर मेन एंजाइम जो यूज हो रहा है दैट इज फॉस्फेटेज, राइट. तो गाइज फॉस्फेटेज कई बार क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, फॉस्फेटेज इज मोर, राइट. फॉस्फेटेज इज मोर. फॉस्फेटेज अगर इंक्रीज हो गया देन क्या होगा बेसिकली, देन IP3 से इंस्टेंटली IP2 में कन्वर्ट हो जाएगा, इंस्टेंटली IP में, इंस्टेंटली इनोसिटॉल, इंस्टेंटली ये साइकिल कंटिन्यू होगी, राइट. तो ये इंस्टेंट कंटिन्यूइंग ऑफ दिस साइकिल बेसिकली किसकी वजह से हो रही है, बिकॉज ऑफ द और बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द कैल्शियम. सो और इसकी वजह से ओवर एक्टिविटी हो जाएगी ब्रेन में, और ब्रेन बहुत ही ज्यादा स्टिमुलेशन में न्यूरोट्रांसमीटर्स निकालेगा, राइट. न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रोड्यूस करेगा. तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, एंड इट इज इनिशियली स्टिमुलेटेड बाय द कैल्शियम रिलीज, एंड दस फॉस्फेटेज भी ज्यादा है तो फॉस्फेटेज भी काम करता है, राइट. आफ्टर दैट हमने ये देख लिया कि लिथियम जो है दैट इनहिबिट्स द फॉस्फेटेज, राइट. सो फॉस्फेटेज अगर हम इनहिबिट कर देंगे तो ये जो साइक्लिक प्रोसेस है ये स्लो डाउन हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी. फॉस्फेटेज बहुत कम है तो स्लो डाउन हो जाएगी, और इतनी ज्यादा रैपिड साइकिल में नहीं चलेगी. दैट्स व्हाई इतना ज्यादा ओवर एक्शन नहीं प्रोड्यूस हो सकता ब्रेन में. आई होप इट्स क्लियर.
सो हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैल्शियम को डिक्रीज कर सकते हैं या हम फॉस्फेटेज को डिक्रीज कर सकते हैं। फॉस्फेटेज को डिक्रीज करना जो है दैट इज मेनली प्रेफर्ड, सो फॉर दैट लिथियम इज देयर। एंड अगर हमें कैल्शियम डिक्रीज करना है, फॉर दैट वी आर हैविंग एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, राइट। आई होप इट्स क्लियर। सो हमने लिथियम की बात कर ली, एंटी कन्वर्जेंट और एटिपिकल एंटी साइकोटिक्स की बात भी कर ली। तो लिथियम का जो है, वी आर नॉट हैविंग द फर्स्ट डोज रिस्पॉन्स फॉर द लिथियम। सो हमें इनिशियल इमरजेंसी के लिए ट्रीटमेंट तो देना पड़ेगा। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यूजेस देख लेते हैं लिथियम के। सो देयर इज एक्यूट मेनिया, रिस्पॉन्स इज स्लो, राइट। सो एक्यूट मेनिया है बट लिथियम का रिस्पॉन्स स्लो आएगा, बट हमें इमरजेंसी में ड्रग देनी है। तो preferred is atypical antipsychotic drug, oral or IM, or we can give benzodiazepine with that, and we can start lithium as well as, and we can give a prolonged therapy of the lithium so that prevention हो जाए दो mood changes के बीच में, right? तो ये क्या करता है, जैसे कि ये मेनिया की स्टेट है, ये डिप्रेशन में कन्वर्ट होने वाली है, सो लिथियम इस चीज को प्रिवेंट कर देता है, राइट। मूड चेंजेस को प्रिवेंट कर देता है, राइट। So we can, for the acute treatment, for the emergency treatment, we can prefer antipsychotic drug, atypical antipsychotic drug with benzodiazepine, and side by side we can start lithium as well. Then lithium के other uses are bipolar disorder, drug of choice, lengthen the interval between the cycles of the mood swings, जैसे कि मैंने बताया। देन इट इज ऑल्सो यूज फॉर द डिप्रेशन। बेसिकली जो सुसाइडल थॉट्स आते हैं वो लिथियम की वजह से सबसाइड हो सकते हैं। सो देयर इज ओनली वन ड्रग दैट कैन सबसाइड द सुसाइडल थॉट्स एंड दैट इज लिथियम ओनली, एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड इन न्यूट्रोपीनिया एज वेल, राइट। And alternative to lithium, we are having valproic acid, we are having carbamazepine, we are having lamotrigine, we are having atypical antipsychotics. So valproic acid की अगर हम बात करें, high dose of valproic acid, first line drug for mania. It is the first line drug for mania, and it is faster than lithium. Then Divalproex, it is complex of the valproic acid for better gastric tolerance. Valproate plus atypical antipsychotic is basically used for the acute mania, right? Acute mania के अंदर what we can give, valproate or atypical antipsychotic, or benzodiazepine plus atypical antipsychotic. These two can also can preferred or prescribed. It is effective in prophylaxis of bipolar disorder as well. कार्बामेजिपिन की अगर हम बात करें, लेस इफेक्टिव है, लेस इफेक्टिव दैन लिथियम एंड वैल्प्रोएट, हायर डोसेज प्रोड्यूस न्यूरोटॉक्सिसिटी एंड आर पुअरली टॉलरेटेड। लैमोट्राइजिन की अगर हम बात करें, प्रोफाइलैक्सिस ऑफ द डिप्रेशन इन बाइपोलर डिसऑर्डर। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स की बात करें तो olanzapine, क्यूटापिन, रिस्पेरिडोन और बेंजोडाइजेपिन इज प्रेफर्ड। फर्स्ट लाइन ड्रग थेरेपी इज दिस, राइट। Aripiprazole is there, and it is the favored drug for the treatment of mania, right? Aripiprazole जो कि यूनिक ड्रग थी। Olanzapine की अगर हम बात करें तो it is approved for the maintenance therapy for the bipolar disorder. Both mania and depressive states are suppressed, and long term therapy की वजह से there is high risk of weight gain and hyperglycemia. Olanzapine, right? And now come the antidepressant drugs. So guys, depression का अभी तक कोई significant mechanism is not there. So it is believed that there is deficiency of monoamines, and thus there is deficiency of brain-derived neurotropic factor. So brain-derived neurotropic factor leads to the neuroplasticity, and if this is deficient, then there would be decreased neuroplasticity, and thus it can lead to depression, right? राइट। डिप्रेशन की अगर हम बात करें तो मूड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय persistent sadness and lack of pleasure or interest in previously pleasurable activities, feeling of worthlessness, guilt and suicidal thoughts। एंड कॉजेज क्या हो सकते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ मोनोअमीन, डेफिशिएंसी ऑफ ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर, राइट। तो मोनोअमीन के अंदर मेन डेफिशिएंसी वुड बी ऑफ सेरोटोनिन, देन नॉरएड्रेनालिन एंड देन डोपामिन। एंड मोनोअमीन्स जो होंगे दैट विल बी बेनिफिटेड for the production of brain derived neurotropic factor, and thus brain derived neurotropic factor can form the neuroplasticity, and if there would be neuroplasticity then depression नहीं हो सकता। but अगर monoamine की deficiency हो जाएगी then there would be no brain derived neurotropic factor, then there would be decreased neuroplasticity, and then there would be depression, right? So now what we can do is we can increase the monoamines in the synaptic terminal. So what we can do is we can increase the formation of the monoamine, we can decrease the metabolism of the monoamine, we can decrease the reuptake of the monoamine, or we can prescribe the agonist.
So let's discuss that thing. So we aim of the treatment is to increase the monoamines or mainly 5-HT. So जो 5-HT को increase करते हैं that is typical antidepressants. So antidepressants, typical antidepressants, there are two types basically. जो कि first is the drugs that reduces the metabolism and the other is reuptake inhibitors. So first is monoamine oxidase A inhibitors, specifically A inhibitors, and it is moclobemide and chlorgyline. Moclobemide is also called as REMA, reversible inhibitor of monoamine oxidase A, right? REMA, moclobemide and chlorgyline, right? So this reduces the metabolism. Basically, these drugs reduces the metabolism because they inhibit the metabolizing enzyme, that is MAOA inhibitor, right? And then we are having reuptake inhibitors as well. So there is non-selective 5-HT so basically there is non-selective and there is selective. Non-selective के अंदर basically क्या करेंगे वो, so they will be increasing 5-HT and noradrenaline, and selective के अंदर it will only be increasing the 5-HT, right? TCS की अगर हम बात करें तो we are having imipramine, desipramine, clomipramine, amitriptyline, nortriptyline, right? Imipramine, desipramine, clomipramine, amitriptyline, nortriptyline. These are the drugs. They are TCS, tetracyclic antidepressants. These drugs increases the 5-HT and noradrenaline and the synaptic terminal, right? Uh, if person has psychotic and depression, which drug is, so that is a condition. So lithium is prescribed. Lithium is the drug of choice. I hope that Prabhakar आपका solution मिल गया होगा. Lithium is the drug, right? Actually, this is the fourth session of the day, and it's difficult. It's difficult to take the class at this time. But non-selective के अंदर ही we are having SNRIs also as well. So SNRIs basically they are venlafaxine, desvenlafaxine, milnacipram, levomilnacipram, and duloxetine. So the drugs that are non-selective that will be increasing the 5-HT and noradrenaline. TCAs are imipramine, desipramine, clomipramine, amitriptyline, nortriptyline, and SNRIs are venlafaxine, desvenlafaxine, milnacipram, levomilnacipram, and duloxetine. And guys, selective 5-HT के लिए SSRIs are there: fluoxetine, paroxetine, fluoxamine, citalopram, escitalopram, dapaxetine. For premature ejaculation, it is also indicated for premature ejaculation, dapaxetine, right? So हमने बात कर ली the drugs that reduce the metabolism, MAOA inhibitors, moclobemide and chlorgyline. Then हमने reuptake inhibitors की बात करी that are selective and that are non-selective as well. So selective के अंदर हमने बात कर ली कि the drugs that basically that increases the 5-HT and NA, and selective के अंदर that increases the 5-HT only. Non-selective के अंदर TCAs and SNRIs are there. TCAs tricyclic antidepressants, इसके अंदर सारी pramine और triptyline वाली drugs are there. imipramine, desipramine, clomipramine, amitriptyline, nortriptyline. And SNRIs के अंदर venlafaxine, desvenlafaxine, milnacipram, levomilnacipram and duloxetine. Right? And selective 5-HT जो increase करते हैं that are SSRIs, fluoxetine, paroxetine, fluoxamine, citalopram, escitalopram and dapaxetine. And atypical antidepressants की अगर बात करें तो they act through other mechanisms, right? So they act through other mechanisms. But first of all, we will be discussing antidepressants in the deep, right? चलो अंदर घुसते हैं एंटीडिप्रेसेंट्स के, टिपिकल एंटीडिप्रेसेंट्स के. फर्स्ट ऑफ ऑल एमएओए इनहिबिटर्स, हमने रीमा की बात करी थी, मॉक्लेबिमाइड की, रिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ एमएओए, राइट? शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, नो डाइटरी रिस्ट्रिक्शन आर रिक्वायर्ड, लैक्स एंटीकोलिनर्जिक एक्शन, सेफर इन ओवरडोजेस, सेफ इन एल्डरली एंड हार्ट डिजीजेस. अब यहाँ पर मैंने नो डाइटरी रिस्ट्रिक्शन यहाँ इसलिए मेंशन करा बेसिकली बिकॉज जो भी MAO इनहिबिटर्स ले रहे होते हैं ना, मोनोअमीन ऑक्सीडेज जो भी ले रहे होते हैं ना, मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, उनके अंदर वी रिस्ट्रिक्ट द चीज कंजम्पशन, राइट? हमें वो सारी चीजें ब्लॉक करनी पड़ती हैं जो कि टायरामीन और एम्फेटामिन दे सकते हैं, बिकॉज टायरामीन और एम्फेटामिन दे आर indirect indirect sympathomimetic drugs. Basically they indirectly increase the noradrenaline or adrenaline in the body, right? So अगर आपको याद हो तो दे इंक्रीज इनडायरेक्टली. सो बेसिकली क्या करते हैं ये जाते हैं वेसिकल के अंदर, वेसिकल के अंदर नॉर एड्रेनालिन पड़ा होता है, नॉर एड्रेनालिन को कहते हैं गेट लॉस्ट, गेट आउट, दिस इज माय हाउस. नॉर एड्रेनालिन प्यार से बाहर निकल जाता है एंड ये खुद चले जाते हैं टायरामीन एंड एम्फेटामिन.
तो नॉरएड्रेनालिन सीवियरली बाहर आ जाता है एंड नॉरएड्रेनालिन की वजह यू ऑल नो इंक्रीज बीपी वुड बी प्रोड्यूस्ड। तो जो भी ड्रग्स, जो भी पेशेंट्स मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स ले रहे हैं, सो वो क्या करेंगे, वो उनके अंदर अगर उन्होंने चीज ले ली काफी ज्यादा अमाउंट में, सो देयर वुड बी चीज रिएक्शन होगा एंड इंक्रीज बीपी क्राइसिस, हाइपरटेंसिव क्राइसिस में चले जाएंगे वो पेशेंट। एंड चीज रिएक्शन के लिए द ड्रग ऑफ चॉइस इज क्लोनिडिन। नो, या I hope it's clear, right? So let's move further, right? So चीज रिएक्शन के लिए, अगर चीज रिएक्शन हो गया अगर पेशेंट को, so the drug that would be used is फेंटोलामीन, राइट। एंड एक और चीज मतलब एक और डिसऑर्डर ऐसा ही है चीज रिएक्शन के जैसे अपीयर होता है, दैट इज क्लोनिडिन विड्रॉल। तो क्लोनिडिन विड्रॉल के अंदर भी द ड्रग ऑफ चॉइस इज फेंटोलामीन। फेंटोलामीन इज गिवन, फेंटोलामीन इज रिवर्सिबल, राइट। तो दैट्स वाई इतना ज्यादा सीवियर एक्शन नहीं प्रोड्यूस होता। एडवर्स इफेक्ट्स की अगर हम बात करें, नोजिया, डिजीनेस, हेडेक, इंसोम्निया, रेयर एक्साइटमेंट एंड लिवर डैमेज, राइट। तो या फेंटोलामीन इज देयर ना, यस, फेंटोलामीन इज देयर। And adverse effects, nausea, dizziness, headache, insomnia, rare excitement and liver damage. And non-selective reuptake inhibitors की अगर हम बात करें, TCAs, tricyclic antidepressants, so they reuptake the 5-HT, they block the reuptake of the 5-HT and Na. They are called as first generation antidepressants, should be avoided in hypertension, angina and MI, right? Should be avoided in hypertension, angina and MI. So the drugs are imipramine, desipramine, clomipramine, amitriptyline and nortriptyline. Mechanism is it blocks basically NET and SERT, norepinephrine transporter and serotonin transporter located in the neuronal and platelet membrane. Or second one, it blocks the acetylcholine, alpha blocking and H1 blocking, right? Pharmacological actions जो है, that is basically CNS नॉर्मल। जो फार्माकोलॉजिकल एक्शंस है, दैट इज बेसिकली क्या है, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस दैट आर प्रोड्यूस्ड अगर नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर दी ये ड्रग्स, देन टायर्डनेस वुड बी प्रोड्यूस्ड, क्लमजी फीलिंग, लाइट हेडेडनेस, डिफिकल्टी इन कंसंट्रेटिंग, अनस्टेडी गेट, नो मूड एलिवेशन एंड अनप्लेजेंट, राइट। अगर नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर ये ड्रग दी, सो ये सब इफेक्ट्स प्रोड्यूस होंगे, टायर्डनेस, क्लमजी फीलिंग, लाइट हेडेडनेस, डिफिकल्टी इन कंसंट्रेटिंग, अनस्टेडी गेट, नो मूड एलिवेशन एंड अनप्लेजेंट, right? And depressive patients के अंदर दी, then 2 to 3 weeks prolonged therapy, increase mood is gradually elevated, become more communicative, start taking interest in surrounding, no euphoriants, only antidepressants, night awakening are reduced and high doses produced, desynchronization, right? On your personal channel, make a video on note taking on, या मेरे को पहले भी किसी ने, पहले भी बहुत लोगों ने बोल रखा है, नोट टेकिंग पर वीडियो बनाओ, नोटेबिलिटी पर वीडियो बनाओ, गुड नोट्स पर वीडियो बनाओ, बट एज सच ना कभी कोई टाइम की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, तो दैट्स वाई मैंने अपनी लिस्ट में नोट डाउन कर रखा है नोट टेकिंग, नोटेबिलिटी एंड गुड नोट्स के बारे में। एंड देखते हैं इस मंथ के अंदर आ जाए अगर वो वीडियो, तो आई होप कि इस मंथ के अंदर आ जाए, बाकी लेट्स सी। अभी थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है। पहले बुक का था, बुक कंप्लीट करनी थी, फिर उसको पब्लिश करना था, तो वो सब एरर्स, वो सब उसके अंदर एरर्स देखने थे, वो सब काम था, तो उसके अंदर दे आर टाइम टेकिंग प्रोसेसेस। फिर थोड़ा सा कॉलेज का भी थोड़ा बहुत काम होता है, फिर अनअकैडमी का यहाँ लेक्चर्स का काम होता है, पीपीटीज बनानी होती है, तो दैट्स वाई अभी थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा था। बट एक बार अनअकैडमी पे इस वीक के बाद, इस वीक तक का जो टारगेट है, उसके बाद बेसिकली हमें इस वीक तक सीवीएस को खत्म करना है 80%। सो दिस इज माय टारगेट, राइट। सो अगर वो खत्म हो गया, देन हम थोड़े बहुत फ्री हो सकते हैं, बट अगर नहीं हुआ तो देखते हैं। TCAs lowers the seizure threshold and produce convulsions in overdosage. Clomipramine, buprenorphine have highest seizure precipitating tendency. ANS के अंदर anticholinergic blocking side effects are dry mouth, blurring of vision, urinary retention and constipation. These are the ANS side effects that are produced, right? And CVS के अंदर tachycardia, postural hypotension, arrhythmia, ECG changes, T wave suppression is seen.
तो अगर ये नॉर्मल ईसीजी है, PQRS, पी वेव थोड़ी ज्यादा लंबी हो गई, प्लीज डोंट माइंड, ये छोटी होती है, QRS, एंड दिस इज टी। सो टी पी से डबल होती है। सो यहाँ तो बहुत ज्यादा हो गई, बट डबल होती है। राइट, सो अब क्या है, पी वेव सप्रेशन होगा। राइट, या तो स्किप भी हो सकती है। सो ये होगा पी वेव QRS कॉम्प्लेक्स, एंड देन पी वेव, टी वेव वुड बी सेम एज पी वेव। और कई बार क्या होता है, कई बार टी वेव स्किप हो जाएगी। राइट, ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दीज ड्रग्स, अगर ईसीजी टेस्ट करेंगे देन टी वेव स्किप होने के चांसेस भी हो जाते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स की अगर हम बात करें तो गुड ओरल एब्जॉर्प्शन इज देयर, बट देयर इज अ स्लो एब्जॉर्प्शन, highly bound to plasma proteins and extensively metabolized in the liver. Dimethylation, oxidation and glucuronidation, and metabolization तीन प्रोसेसेस से होता है, डाइमिथाइलेशन, ऑक्सीडेशन एंड ग्लूकुरोनाइडेशन। राइट, तो डिप्रेसिव पेशेंट के अंदर 2 to 3 weeks prolonged therapy increase mood is gradually elevated basically, and become more communicative, start taking interest in surroundings। बेसिकली ये यूफोरिएंट वाला एक्शन नहीं प्रोड्यूस करती, दे आर ओनली एंटी डिप्रेसिव्स, एंड नाइट अवेकनिंग्स आर रिड्यूस्ड, हाई डोजेस प्रोड्यूस डिसिंक्रोनाइजेशन। एंड एडवर्स इफेक्ट्स की हमने बात कर ली, एंड फार्माकोकाइनेटिक्स की हमने बात कर ली। तो एडवर्स इफेक्ट्स की अगर हम बात करें, सो देयर कैन बी ड्राई माउथ, बैड टेस्ट, यूरिनरी रिटेंशन, कॉन्स्टिपेशन, वेट गेन, सिडेशन, स्वेटिंग, सीजर थ्रेशोल्ड, पोस्चरल हाइपोटेंशन, सेक्सुअल डिस्ट्रेस, arrhythmia, rashes, and jaundice. These are the side effects that can be produced with this drug, with these drugs. And अगर there is acute poisoning of TCAs, then क्या होगा, बेसिकली सेल्फ अटेम्प्टेड सुसाइड के अंदर ये सब होता है, जब काफी सारी ड्रग की टैबलेट्स को एक साथ ले लेते हैं। तो क्या मैनिफेस्टेशन होती है, एक्साइटमेंट, डिलीरियम, एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स इंक्रीज हो जाते हैं, यूरिनरी रिटेंशन, ड्राई माउथ एंड ब्लरिंग ऑफ विजन, muscle spasms, convulsions, coma, respiration is depressed, body temperature is decreased, BP is decreased, tachycardia is produced, basically reflex tachycardia is produced, right? ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट पॉइजनिंग की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको, एबीसी मेंटेन करना है, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। इमरजेंसी में पेशेंट आया है तो आपको एबीसी मेंटेन करना है, गैस्ट्रिक लेवेज करना है अगर वो विद इन 2 hours में आया तो। देन रेस्पिरेटरी असिस्टेंस देनी है, बिकॉज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन बहुत ही कॉमन है, और एक बार रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में होगा देन पेशेंट कैन गो इनटू रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, देन मेटाबॉलिक एसिडोसिस। राइट, और फ्लूइड इन्फ्यूजन भी देना, बिकॉज बीपी कॉन्स्टेंटली लो हो रहा है, मेंटेनेंस ऑफ बीपी करना है। देन ड्यू टू रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, जैसे मैंने कहा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर जा सकता है पेशेंट, देन मेटाबॉलिक एसिडोसिस में भी जा सकता है। सो दैट कैन बी करेक्टेड बाय अल्कलाइनाइजेशन एंड बाय इन्फ्यूजिंग द बाइकार्बोनेट। राइट, आईवी से बाइकार्बोनेट कॉन्स्टेंटली इन्फ्यूजन देना होता है। सो इस इन्फ्यूजन की वजह से अल्कलाइजेशन होगा, एंड जो एसिडिटी है दैट विल बी न्यूट्रलाइज्ड। राइट, एंड डायजेपम की अगर हम बात करें तो इंजेक्टेड आईवी टू कंट्रोल द कन्वल्शंस एंड डिलीरियम, लाइडोकेन, प्रोपेनोलॉल एंड कार्डियक एरिथमियास, एंड क्लास 1A 1C एंटी एरिथमिक एंड डिगॉक्सिन। बेसिकली इनके साथ देखो, diazepam can be used to treat the or to control the convulsions, right? राइट, एंड जो क्लास 1A एंड 1C एंटी एरिथमिक ड्रग्स है ना, और डिगॉक्सिन है, दैट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, वो नहीं देनी कार्डियक एरिथमियास के लिए। वी हैव टू गिव लाइडोकेन एंड प्रोपेनोलॉल। तो इनिशियली प्रोपेनोलॉल देंगे, बट अगर वो कंट्रोल नहीं हो रहा, काफी ज्यादा टेकिकार्डिया में चला गया पेशेंट, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में चला गया पेशेंट, देन लाइडोकेन इज प्रिस्क्राइब्ड। राइट, लाइडोकेन शुड बी प्रिस्क्राइब्ड। एंड class 1A 1C of antiarrhythmics and digoxin are contraindicated, absolutely contraindicated, right? So you don't have to use these drugs. Then it's time to discuss the non-selective reuptake inhibitors. So SNRIs are there, serotonin noradrenaline reuptake inhibitors. So they are used for the severe depressions. They are called as second generation antidepressants, should be avoided in HT and angina and MI. So drugs are venlafaxine, desvenlafaxine, fastest onset, and अगर हम treatment की बात करें, then they are indicated for the mood changes, hot flashes in menopausal syndrome, social anxieties, and eating disorders. So venlafaxine, desvenlafaxine, they are used for the mood changes, hot flashes in the menopausal syndromes, and social anxieties, eating disorders. And side effects जो produce होते हैं, that is basically
जो साइड इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं दैट इज बेसिकली नोजिया, स्वेटिंग, एंजाइटी, डिजीनेस, इम्पोटेंसी, राइट। आई होप इट्स क्लियर। सो लेट मी सी कि चैट चल रही है ना। या इट्स वर्किंग। एंड मिलनासिप्राम एंड लीवोमिलनासिप्राम is the drug, or duloxetine. So basically ये सब drugs जो हैं that is used for the diabetic neuropathic pain, but जो preferred drug is pregabalin, right? These are generally not used. Pregabalin is used, right? Why it is paused? No, nothing is there now. It is working. Yeah, it is working. Huh. And stress urinary incontinence, maintenance therapy in panic disorder, fibromyalgia, and side effect is lesser sexual प्रॉब्लम्स एंड जीआई इंटॉलरेंस। जैसे कि यहाँ पर इम्पोर्टेंसी का कॉज था, बट इसके अंदर कोई ऐसा कॉज नहीं है, लेसर चांसेस हैं, रेयर चांसेस हैं, बट जीआई इंटॉलरेशन इज आल्सो पुअर, राइट। सो टीसीएस, सो लेसर साइड इफेक्ट्स, तो इसके साइड इफेक्ट्स लेसर हैं देन टीसीएस, राइट। सो दिस इज जनरली प्रेफर्ड प्रेस्क्राइब्ड over TCAs, right? Now comes the SSRIs. So treatment indication is drug of choice for the mild and moderate depression, and drug of choice for all the neurotic disorders, right? And drugs जो कि हैं fluoxetine, paroxetine, fluoxamine, sertraline, citalopram, escitalopram, depoxetine. Depoxetine is the drug for premature ejaculation. Then they are also called as second generation antidepressants, and side effects are nausea, anxiety, CNS, headache, bad dream, sexual के लिए anorgasmia, delayed ejaculation, discontinuation syndrome, and delayed action. Right, so these are safer and better accepted. They produce little or no sedation and no cognitive impairment. SSRIs, NSAIDs, and increase the gastric blood loss. Serotonergic syndrome की अगर हम बात करें तो serotonergic drugs are basically SSRIs and MAOI, tramadol and pethidine, right? तो सेरोटोनिर्जिक सिंड्रोम तब हो सकता है जब सेरोटोनर्जिक ड्रग जैसे कि एमएओआई, ट्रामाडोल और पैथिडीन के साथ में हमने प्रेस्क्राइब करी विद एसएसआरआईज, एजिटेशन, रेस्टलेसनेस, रिजिडिटी, हाइपरथर्मिया, स्वेटिंग, ट्विचिंग फॉलोड बाय कन्वर्जन। तो सेरोटोनर्जिक सिंड्रोम अगर कहीं भी आए तो दिस इज द प्रोसेस। सबसे पहले एजिटेशन फील होगी, रेस्टलेसनेस फील होगी, रिजिडिटी फील होगी, हाइपरथर्मिया होगा, इंक्रीज टेम्परेचर, देन स्वेटिंग होगी, ट्विचिंग होगी, फॉलोड बाय कन्वर्जन, राइट। So till now we have completed. So we are about to complete antidepressant things, right? And fluoxetine की अगर हम बात करें तो longest acting approved for depression in children, increased just 7 years plus OCDs, right? And side effect क्या produce हो सकते हैं? Agitation and dermatological reaction, right? Dermatological reaction. I hope it's clear to you. Wait a second. Let me just check. Everything is fine. Everything is good. Good. Going good. Yeah. Everything is good. Uh, what is ये क्या चल रहा है यार? Yeah. Everything is fine. I think. Yeah. So fluoxamine, fluoxamine is the drug that is shorter acting, and it is indicated for the generalized anxiety disorders (GAD). And wait a second, yeah. So fluoxamine is used for the anxiety disorders, basically nausea, and side effects are nausea, dyspepsia, flatulence, nervousness, discontinuation reaction. Sertraline is the drug that is used for the juvenile depression and post-traumatic stress disorder, and it is long-lasting. And depoxetine is indicated for the delaying premature ejaculation, and rapid action is produced, can be taken 1 hour before the sexual intercourse and sexual distress, right? So side effects are nausea, vomiting, loose motions, headache, dizziness, insomnia, and after that एक सेकेंड या यूजेस ऑफ एसएसआरआईज की अगर हम बात करें तो बहुत सारे यूजेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट चॉइस ड्रग है ओसीडीज के लिए, पैनिक डिसऑर्डर के लिए, सोशल फोबियाज के लिए, ईटिंग डिसऑर्डर्स के लिए, प्री मेंस्ट्रुअल डिस्ट्रोफिक डिसऑर्डर के लिए, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के लिए। आफ्टर दैट एंजाइटी डिसऑर्डर्स के लिए भी इट इज यूज, बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर के लिए भी यूज, कंपल्सिव बाइंग इज आल्सो बेसिकली यूज, क्लेप्टोमेनिया के लिए भी यूज, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के लिए भी यूज, एंड पोस्ट एमआई पेशेंट के लिए भी इट इज यूज। पोस्ट एमआई पेशेंट के अंदर इट इंक्रीज द वर्क कैपेसिटी एंड एलिवेशन इन द मूड। एंड नाउ कम द एटिपिकल एंटीडिप्रेसेंट्स। सो वी आर हैविंग अ निमोनिक बैट मैम। So the drugs are bupropion, amitriptyline, tianeptine, mirtazapine, amoxapine,
atomoxetine and niacin. These are the drugs. These are the drugs, and the mnemonic is BAT, ma'am. So bupropion is the anti-smoking drug, and epinephrine and diamantine increase the reuptake of 5-HT. But amoxapine D2 blocking करती है, and atomoxetine it is used in ADHD, right? And bupropion they increase the DA and NA, excitant sustained release formulation in the smoking cessation. Basically, it is used. Nicotinic withdrawal symptoms are less with bupropion. कॉन्ट्राइंडिकेशन की अगर हम बात करें तो ईटिंग डिसऑर्डर एंड बाइपोलर डिसऑर्डर. साइड इफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो इंसोम्निया, ड्राई माउथ, एजिटेशन एंड नोजिया. ओवरडोजेज अगर हो गई देन इट कैन कॉज सीजर्स, right? Now comes the amoxapine. Amoxapine blocks the amoxapine basically blocks the D2 and increases the Na, right? So it blocks the D2 and it so D2 blocking and related to the antipsychotic drug, antidepressant, neuroleptic syndromes, extrapyramidal side effects are produced. Overdosage अगर हो गई then it can produce status epilepticus. Mirtazapine की अगर हम बात करें, it increases the Na and increases the 5-HT in the synapse, blocks the alpha 2 and 5-HT 2, 3, 4 receptors. Noradrenergic and specific serotonergic antidepressants, and they are selective enhancement of 5-HT1 receptor, and has less sexual side effects, right? And side effects जो produce होते हैं weight gain and increase appetite. Esketamine they block the NMDA receptor of glutamate, nasal spray for the depression, and brennaloxone and allopropirenol they are approved for the postpartum depression. And uses of the or atypical antidepressants are endogenous depression, OCD, ADHD, anxiety disorder, neuropathic pains, premature ejaculation, smoking cessation, enuresis, migraine, and pruritus. Right. So these all are the indications for the atypical antidepressants. And now comes the bipolar disorder. So bipolar disorder के अंदर basically there are two types, जैसे कि mania and depression. So अगर हम mania की बात करेंगे, then अगर हम mania की बात करेंगे, so lithium is the drug of choice. Basically it prevents the constant mood swings. It prevents the constant mood swings, right? समझ में आ रहा है? कांस्टेंट मूड स्विंग्स को ये इनहिबिट करेगा, प्रिवेंट करेगा. व्हाई? बिकॉज फॉस्फेटेज को इनहिबिट करेगा ये, राइट? एंड फर्दर अगर हम आगे चले, सो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स आर यूज्ड फॉर द मेनिया एज वेल. वैल्प्रोएट, सीबीजेड एंड इज यूज्ड इन डिप्रेशन विद साइकोसिस. अमोक्सासिलिन इज यूज्ड इन डिप्रेशन विद साइकोसिस. So are you asking what are you saying, man? Amoxapine is related to antipsychotic drug plus antidepressant, पर neuroleptic symptoms can be produced, neuroleptic syndromes produce हो सकता है, extrapyramidal side effects आ सकते हैं. But हाँ, yeah, it can be produced, but the most effective drug is this. So I hope it's clear. Most effective drug जो हमने बात करी थी वही है, but yeah, it can be used, but these generally they are not generally used. Right? ये potent drug इतनी ज्यादा नहीं है, so ये इतनी ज्यादा use नहीं होती. बेसिकली देखो, यूज होती हैं जो काफी साल से यूज हो रही हैं. न्यूअर ड्रग्स जनरली इतनी जल्दी यूज नहीं होती, राइट? सो ये सब न्यूअर ड्रग्स हैं एंड ये सब यूज नहीं होती, राइट? एंड डिप्रेशन के साथ साइकोसिस नहीं हो सकता जनरली. अगर डिप्रेशन के साथ साइकोसिस है तो वो एक तरीके का बाइपोलर डिसऑर्डर ही होगा, राइट? सो एक तो डिप्रेशन है, सो पेशेंट इज कॉन्स्टेंटली डिप्रेस्ड एंड एट द सेम टाइम वो एजिटेशन कैसे शो करेगा, इरिटेशन कैसे शो करेगा, ओवर एक्टिवेशन कैसे शो करेगा. ये बात आप समझो तो सही ना, कि साइकोसिस और डिप्रेशन कैसे साथ में हो सकते हैं. डिप्रेशन एक इंटरवल में हो सकता है, साइकोसिस अनदर इंटरवल में हो सकता है, बट एट द सेम टाइम दोनों एक साथ नहीं हो सकते. प्लस साइकोसिस के अंदर ही ये दो टाइप के बेसिकली म्यूड डिसऑर्डर्स होते हैं, मेनिया, डिप्रेशन. एंड मेनिया एंड साइकोसिस आर जनरली सिमिलर, right? I hope it's clear. And antipsychotic drugs, that is drug of choice of bipolar in pregnancy, and as lithium is contraindicated in pregnancy. Depression की अगर हम बात करें तो lithium for prevention of depression, only drug to prevent the suicidal risk in the bipolar disorder, and lamotrigine.
राइट। एंटी एंजाइटी ड्रग्स की अगर हम बात करें तो एंजाइटी अनप्लेजेंट इमोशनल स्टेट एसोसिएटेड विद अनईजीनेस डिस्कम्फर्ट सोमैटिक सिम्टम्स एनोरेक्सिया ब्रेथलेसनेस पाल्पिटेशंस एंड पैरास्थीसिया। तो एंजाइटी के लिए इट इज अनप्लेजेंट इमोशनल स्टेट एसोसिएटेड विद अनईजीनेस डिस्कम्फर्ट सोमैटिक सिम्टम्स एनोरेक्सिया ब्रेथलेसनेस पाल्पिटेशंस एंड पैरास्थीसिया। ड्रग्स की अगर हम बात करें तो बेंजोडाइजेपिन डाइजेपैम ऑक्साजिपैम लोराजिपैम एप्लाजिपैम एंड क्लोराजिपैम इज देयर। Azapriprons and SSRIs or SNRIs are there, buspirone, gepipirone and isopiron, right? And sedative and antihistaminics are hydroxyzine and beta blockers के अंदर we can use propranolol. तो एंटी एंजाइटी ड्रग्स के अंदर वी कैन यूज दीज थिंग्स। तो एंजाइटी के अंदर बेसिकली क्या है, अनप्लेजेंट इमोशनल स्टेट है जिसके अंदर एक अनईजी डिस्कम्फर्ट है, कॉन्स्टेंटली फियर की सिचुएशन है पेशेंट के साथ। तो ही इज फियरिंग कि कुछ ऐसा अनप्लेजेंट हो जाएगा, कुछ ट्रेजेडी हो जाएगी, बट नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज हैपनिंग। मतलब कोई ट्रेजेडी नहीं होने वाली, बट ही इज कॉन्स्टेंटली अननेसेसरीली थिंकिंग, राइट। सो उस कंडीशन के अंदर severe अगर है then there is drugs that are benzodiazepine azapirons ssris snris sedative antihistaminics and beta blockers as well. So general features are mild CNS depression, produce restfulness state of mind, do not produce extrapyramidal side effects, have anticonvulsant property and produce physical dependence and carry abuse liability. Benzodiazepines की अगर हम बात करें तो ट्रीट इंडिकेशन है सीरियस एक्यूट एंजाइटी के अंदर, then it relieve the anxiety at lower doses without producing significant CNS depression. They are more selective for limbic system and proven clinically better to be both quality and quantity of improvement is anxiety and stress related symptoms, right? And little effect on other body symptoms and lower the physical dependence, safer in overdose and delayed withdrawal symptoms, right? I hope everything is going good. I hope everything is going good, right? So benzodiazepine के अंदर serious acute anxiety is basically it is indicated for the serious acute anxiety. It relieves the anxiety at the lower doses without producing any significant CNS depression and little effect on the other body symptoms. So guys, हमने जनरल फीचर्स देख लिए एंजाइटी एंटी एंजाइटी ड्रग्स के। एंड एडवर्स इफेक्ट्स क्या क्या प्रोड्यूस हो सकते हैं, सिडेशन लाइट हेडनेस साइकोमोटर कॉग्निटिव इंपेयरमेंट कंफ्यूजन स्टेट्स इंक्रीज्ड एपेटाइट वेट गेन सेक्सुअल फंक्शन ऑल्टरेशन, राइट। Then chlordiazepoxide, it is indicated for the alcohol withdrawal and chronic anxiety state. Then diazepam is the drug that is indicated for the acute panic attacks, anxiety associated with organic disease. Then oxazepam is the elderly patient के अंदर patient with liver disease. Lorazepam is indicated for acute anxiety states, panic disorder, OCDs, tension syndrome, and psychosomatic disorders. And for this IM injection is preferred, right? And IV use of lorazepam is used as in the status epilepticus, and clonazepam is indicated for the urgent treatment of acute panic attacks, right? And azapirons basically जो buspirone है, it does not produce sedation, it does not interact with benzodiazepine receptor, it does not produce tolerance, it does not suppress benzodiazepine barbiturate withdrawal syndrome, no muscle relaxant property, no anticonvulsant properties produced, and and it is indicated for the mild moderate generalized anxiety, and beneficial effect develops slowly, right? एंड साइड इफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो माइनर साइड इफेक्ट्स आर प्रोड्यूस डिजीनेस नॉजिया एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हेडेक लाइट हेडेडनेस एक्साइटमेंट ऑल्टरेशन इज आल्सो और अलर्टनेस इज आल्सो लॉस्ट, राइट। एंड बीटा ब्लॉकर्स की अगर हम बात करें इट इज यूज्ड टू रिलीव द सिम्टम्स लाइक इंक्रीज बीपी ट्रेमर्स जीआई हरिंग used as adjuvant to the benzodiazepines. The role of beta blockers is quite limited to these symptoms only. So first of all, treatment of anxiety is basically counseling only. First of all, counseling करने because this is a condition of neurosis, right? So neurosis की condition है, reality is not lost. So patient को positive negative पता है. That's why counseling will help. Treat with the drugs only when it is disabling. And acute anxiety के अंदर benzodiazepines are used and chronic anxiety के अंदर buspirone with SSRIs or SNRIs are produced. Then daily bedtime dose is generally preferred. Panic attacks are initially treated with benzodiazepines, but benzodiazepine is not used for the maintenance therapy. Buspirone, SSRIs and SNRIs basically they are used. And the phobias are treated with SSRIs, right? जो भी phobias are they are treated with SSRIs.
देन कम्स द सेडेटिव हिप्नोटिक्स, ये हमने सुबह भी पढ़ा था, सो वी विल जस्ट बहुत ही जल्दी जल्दी पढ़ेंगे. सो सेडेटिव ड्रग है दैट ओवरकम द एक्साइटमेंट एंड calms the subject without inducing the sleep, but hypnotic जो है that induces the sleep and maintain the sleep and similar to the normal arousable sleep. Right, then drugs are benzodiazepine, barbiturates, Z drugs and other drugs. तो बेंजोडाइजेपिन्स के अंदर डायजेपैम, फ्लोराजेपैम, नाइट्राजेपैम, एल्प्राजेपैम एंड बार्बिट्रेट्स के अंदर फिनोबार्बिटॉन, ब्यूटोबार्बिटॉन, पेंटोबार्बिटॉन, थायोपेंटोन एंड मीथोएक्सिटोन. एंड जेड ड्रग्स के अंदर जोपिक्लोन, जालेप्लोन एंड जोल्पिडेम. एंड अदर ड्रग्स के अंदर ट्राइक्लोफॉस, लेमेंटियन, मेलिटोनिन एंड सुवोरेक्सेंट या ऑरेक्सिन इनहिबिटर्स आर देयर. राइट. फर्दर देखते हैं तो डायजेपैम, फ्लोराजेपैम, नाइट्राजेपैम, फ्लूनिट्राजेपैम एंड ऑक्साजेपैम, these are the drugs, these are the drugs that comes under the benzodiazepine, and इसका antidote is flumazenil, and they are contraindicated in the elderly patient with the liver failure, uh, except the oxazepam and lorazepam. These two drugs are safer in liver failure patients, and but benzodiazepine can cause hangover. So now they produce the lower ceiling CNS depression than barbiturates, high therapeutic index, no loss of consciousness, and patient can be aroused. IV injection, BP falls and cardiac contractility decreases. In lorazepam and diazepam due to decreased cardiac contractility. In midazolam due to the decreased peripheral resistance. Less distortion of the sleep architecture, hasten the sleep onset and reduce intermittent awakening. Then anterogate amnesia less marked. In selective anti-anxiety effect is seen, prevent the stress ulcers as well. तो मैकेनिज्म हमने देखा था. सो दिस इज अ गाबा रिसेप्टर क्लोराइड चैनल. इसके ऊपर देयर इज अल्फा बीटा, अल्फा गामा बीटा, सो ये सब है. सो देयर इज GABA receptor that is present on beta interface. Then on the alpha and gamma interface there is benzodiazepine receptor. On that all the benzodiazepine, all the diazepam like drugs act, plus fumazanil and DMCM drugs भी act होती है. Then barbiturate receptor is present on alpha beta interface, right? So ये चीज हमने कर ली थी. So we'll be heading fast, and only alpha beta units are required for the GABA action. GABA receptor is located on the beta subunit. Alpha beta interface barbiturate receptor, alpha gamma interface benzodiazepine receptor, and thus exhibits a constitutive activation of DMCM and flumazenil as well. Flumazenil is benzodiazepine antagonist and DMCM is inverse agonist. Hypnotic benzodiazepine की बात करें तो flurazepam and diazepam. Flurazepam produces active metabolite of longer T half life. अगर it is indicated for the suitable for the patient for who have frequent nocturnal awakenings and not for the elderly, because there is a risk of next day sedation, ataxia and mental confusion. So diazepam is the oldest drug, anxiolytic, hypnotic, muscle relax and pre-anesthetic, emergency seizure controlling action, and rapid oral absorption is seen, but indicated for the sleep onset difficulty as well as sleep maintenance. After chronic use, rebound insomnia may occur. Right. And nitrazepam is equipotent and diazepam, and lorazepam absorbed slowly, no active metabolite is produced, promotes sleep in anxious and tense patient. Eprazolam primary indication anxiety disorders, also used as nighttime hypnotic and rapidly absorbed. Adverse effects की अगर हम बात करें तो benzodiazepine are relatively safer than barbiturate. Dizziness, vertigo, ataxia, disorientation, amnesia, impairment of psychomotor skills, sleep waking, hangover, weakness, blurring of vision, urinary retention, dry mouth, aggravate sleep apnea, paradoxical stimulation, irritability, and sweating. Cross tolerance to alcohols and other CNS depression may occur. बार्बिट्रेट्स की अगर हम बात करें तो नॉट जनरली यूज. एक्शंस की अगर हम बात करें तो बेसिकली डोज डिपेंडेंट एक्शन इज प्रोड्यूस. फर्स्ट ऑफ ऑल sedation, then sleep, then anesthesia and then coma. At the lower doses sedation is produced, then अगर हम डोज इंक्रीज करते जाएंगे तो coma can cause. Right, then increase sleep duration, hangover, anxiolytic effect, euphoria, and it decreases the cardiac contractility. Respiratory depression is also produced, and it lowers the BP. It decreases the muscle tone, bladder and bowel motility decreases, urinary retention is seen, constipation is also seen, toxic doses for respiratory failure is also seen, and cardiovascular collapse. And it is indicated for the phenobarbital. Basically, phenobarbital is indicated for the anti-epileptic drug, anti-epilepsis treatment, and thiopenton and methoexyton is indicated for the anesthetic drug, right? So anesthesia अगर produce करना है then thiopenton and methoexyton देंगे. And no specific antidote is there for the barbiturates, but specific antidote for the benzodiazepines is flumazenil, right?
तो अगर बारबिचुरेट की पॉइजनिंग हो गई, एबीसी मैनेज करो, गैस्ट्रिक लेवेज करो, एल्कलाइज डायोरेसिस करो, मैनिटोल 20%, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड हीमोडायलिसिस। बारबिचुरेट गाबा बायोमेटिक है एंड बेंजोडाइजिपिन गाबा फैसिलिटेटरी एंड डीआरसी स्टीप है, इसका फ्लैट है एंड एंजाइम, दिस इज द एंजाइम इंड्यूसर बट बेंजोडाइजिपिन are no enzyme inducers. Addiction is 3 times more than benzodiazepine. Amnesia is produced 3 times more than benzodiazepines and barbiturates का एंटीडोट नहीं है बट बेंजोडाइजिपीन्स का है। एंड नॉन बेंजोडाइजिपिन हिप्नोटिक्स जो कि जेड ड्रग्स हैं, जोपिक्लोन, जोल्पिडेन, ज़ालेप्लोन एंड एज़ोपिक्लोन, these are the drugs that stimulate the alpha and gamma benzodiazepine receptor and indicated preferred over the benzodiazepine for the treatment of insomnia, lack anxiolytic, muscle relaxant and anticonvulsant property, only hypnotic property is their antidote flumazenil. Zopiclone side effect metallic and bitter taste, impaired judgment and alertness, psychological disturbance, dry mouth, and milder dependence. As Zopiclone produce little tolerance, dependence, treatment of the short term as well as chronic insomnia. Zolpidem, sleep latency, shortened, few side effects, most prescribed drugs, right? So these are, Zolpidem is the most prescribed drug. एंड देन अदर ड्रग्स के अंदर हमने मेलेटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट की बात करी थी, सो इटसेल्फ इज मेलेटोनिन एंड मेल्टियन। सो मेलेटोनिन इज द सब्सटेंस दैट इज दैट इंक्रीज, जब ये इंक्रीज होता है तो स्लीप इंड्यूस होती है, सो इट इज इंडिकेटेड फॉर द जेट लैग, शिफ्ट वर्कर्स एंड इंसोम्निया। and orexin receptor antagonist suvorexant, orexin stimulation promotes the wakefulness, so orexin का हम antagonize कर देंगे तो sleep induce होगी, right? and benzodiazepine एक antagonist है flumazenil and इसका action is generally produced within 30 to 60 minutes, right? and indication is to reverse the benzodiazepine anesthesia. Immediate action is produced to treat the benzodiazepine overdosage. And then adverse effects: agitation, discomfort, fearfulness, anxiety, coldness, withdrawal, seizures, right? And now opioid analgesics, ये हमारा last topic है, I think. Let me just see कि last ही है ना, या हाँ, तो opioid analgesics लास्ट टॉपिक है। आई थिंक हम 11 o'clock तक कंप्लीट कर लेंगे। आई थिंक 11 o'clock तक कंप्लीट कर लेना चाहिए, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो let me just read your chat first. Everything is going good. Yeah, everything is going good. अगर कोई डाउट है तो पूछ लो गाइस, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई वुड बी हैप्पी टू क्लियर योर डाउट्स। तो आज हमारी सिडेटिव हिप्नोटिक्स की क्लास हुई है, आज हमारी सीएनएस की समअप की एक क्लास हुई है, आज हमारी एमसीक्यू की एक क्लास हुई है, आज हमारी सीएनएस की समअप की सेकंड क्लास हुई है। इसके अंदर हम फाइनली खत्म कर देंगे सीएनएस को और कल से हम एमसीक्यू करेंगे। एमसीक्यू की 2 और क्लासेस हैं जो ऑलरेडी शेड्यूल्ड है, सो अगर आपको देखनी है, बेसिकली जो रिमाइंडर है वो सेट कर लेना, राइट, सो दैट आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल हम सीवीएस स्टार्ट करने वाले हैं होपफुली, लेट्स सी बट व्हाट हैपेंस, कल का कल देखते हैं, बट एमसीक्यूज खत्म करेंगे कल, so we'll see what happens. So let's start the opioid analgesics. Finally, the last topic of the day. Whew, whew. So let's start, guys. Uh, I'm tired, but so analgesia or pain. Any unpleasant bodily sensation perceived as suffering evoked by the noxious stimulus. And analgesia जो है, that is basically that is the mechanism that selectively relieves the pain by acting in the CNS or peripheral pain mechanism without any significantly altering the consciousness, right? So we are having 3 groups of analgesics: opioid, narcotic, morphine-like analgesics, non-opioid, non-narcotic NSAIDs, adjuvant analgesics, anti-epileptic drug, gabapentin and pregabalin, antidepressant drugs, TCAs, amitriptyline. Receptor की अगर हम बात करें तो mu, kappa and delta. These are the 3 receptors: mu, kappa and delta. Main is mu, so remember mu, right? This is the main receptor. So this produces analgesia, kappa also produces analgesia and delta also produces analgesia. तो जो भी ये तीनों को स्टिमुलेट करेगा तो एनाल्जेसिया वुड बी प्रोड्यूस। बट अब एनाल्जेसिया तो प्रोड्यूस हो रहा है, बट म्यू के काफी सारे अदर फंक्शंस भी है, दैट इज ऑल, दैट इज रिगार्डेड एज सैक्रम। सो it produces sedation, it produces analgesia, it produces constipation, it produces respiratory depression, it produces euphoria, it produces mucosis.
So ये सब effects are produced sacrum, right? Sedation. Oh my God, what's wrong with this? It's looking good, but how to end this? uh, so analgesia is produced. With the analgesia, sedation is produced, constipation is produced, respiratory depression is produced, euphoria is produced, meiosis is produced, right? So uh, these are the drugs that these are the actions, these are the sacrum actions that are produced by the mu receptor. Then we are having kappa receptor, dysphoria, hallucinations. Then we are having delta receptors, analgesia, right? Analgesia only produced. Classification की अगर हम बात करें, then opioid agonists are there, opioid partial agonists are there, opioid agonist antagonists are there, opioid antagonists are there. So these are the four types of the drugs that are present. Right. So first of all is opioid agonists. So they stimulate the mu, kappa, and delta, all the three. So potent analgesia can be produced and sacrum wale effects will be produced. Right. Opioid partial agonist की अगर मैं बात करूँ तो it would be partial agonist at mu only. Right. So partial agonist at mu. So 50% और सब maximal response produce होगा analgesia का भी plus sacrum का भी. राइट. ऑपियोइड एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट की अगर हम बात करें तो एगोनिस्ट ऑन वन kappa एंड एंटागोनिस्ट ऑन द अदर mu, राइट. सो एगोनिस्ट ऑन द वन that is kappa. So analgesia पे तो agonist है. Basically analgesia would be promoted but one third only. इतना ज्यादा potently नहीं हो सकता. And antagonist on the other that is mu. So sacrum would be not produced. Sacrum वाले नहीं produce हो सकते, right? And opioid antagonist they blocks the all the three receptors mu, kappa and delta. ड्रग्स की अगर मैं बात करूं तो opioid agonist के अंदर ड्रग्स आर मॉर्फिन, हेरोइन, मेथाडोन, पेथिडीन, कोडीन, फॉलकोडीन, डेक्सामेथोर्फान, नॉस्कापिन, लोपेरामाइड, डाइफेनॉक्सिलेट, ट्रामाडोल, टेपेंडाडोल, फेंटानिल, एल-फेंटानिल, सू-फेंटानिल, रेमिफेंटानिल. These are the 11 drugs that comes under the opioid agonist. So first of all, the prototype or the most potent drug is morphine. So this is the prototype opioid. So इसके अंदर काफी ज्यादा potent analgesic है, काफी ज्यादा potent sacrum के functions produce होते हैं, right? Then we are having heroin. So this is the most addictive drug. So that's why ये use नहीं होती, right? इसका abuse, exploitation, abuse चलता है. Abuse is there, but as such therapeutically we don't use this drug heroin. Then we are having methadone. Actually, my buccinator muscle is tired, man. Oh my god, buccinator muscle is tired. But it's fine. Methadone, very long acting, used in de-addiction. So methadone is very long acting or used in de-addiction because it is same as opioid. So इसकी वजह से withdrawal symptoms will not be used, will not be produced, right? Pethidine का chronic use अगर हमने करा then seizures would be produced. अभी हम बात करेंगे कि कैसे seizures produce हो सकते हैं. Then codeine, folcodeine, dextromethorphan, noscapine, they are antitussives. Basically, they are indicated for the dry cough. Loperamide, diphenoxylate, they are used for the non-infective antidiarrheal medications and they are contraindicated in infective antidiarrheal things, right? So tramadol and dependadol, they are potent analgesics and they are only used in the emergencies if you want to give any analgesia, right? Then we are having fentanyl, L-fentanyl, sufentanil, remifentanil. So they can cause post-operative muscle rigidity, right? अभी हम एक और बात करेंगे आगे, लेकिन इन्हीं के बारे में आगे. So second type of drug classification is opioid partial agonist or buprenorphine. This is the drug buprenorphine. Opioid agonist antagonist PNB, pentazocine, nalbuphine, and butorphanol. Right? Punjab National Bank, pentazocine, nalbuphine, and butorphanol. Opioid antagonist is naloxone, naltrexone. Drug of choice for the acute opioid poisoning. Drug of choice for maintenance in opioid poisoning. Right? So opioid partial agonist के अंदर the drug is buprenorphine. Then opioid agonist antagonist के अंदर the drug is, so agonist is on kappa and antagonist is on mu. So one third of the analgesia is produced and sacrum वाले functions नहीं produce होंगे, right? पीएनबी बैंक का निमोनिक है पेंटाजोसिन, nalbuphine and butorphanol is the mnemonic. After that, opioid antagonist, naloxone and naltrexone, they are the drug of choice for the acute opioid poisoning, drug of choice for the maintenance in the opioid poisoning. And now let's talk about the opioid
एक ऑनेस्ट मॉर्फिन के बारे में अच्छे से बात कर लेते हैं. Actions produced are sedation, higher doses progressively induce the sleep and then coma, right? And no anticonvulsant action is produced, fits may be precipitated, and analgesia is produced. Strong analgesic properties there, but addictive, but it is most addictive drug, मतलब बहुत ज्यादा addiction produce भी हो सकता है. But analgesic property is more potently, basically pain is relieved more potently. कौन सा pain relieve कर सकता है? Dull, poorly localized visceral pain, right? A sharp pain generally नहीं reveal or relieve हो सकता. Intrathecal injection can cause segmental analgesia without affecting the other modalities. It acts in the substantia gelatinosa of the dorsal horn to inhibit the release of excitatory transmitters like substance P and glutamate. And further, it can cause constipation and action on the enteric plexus, basically ENS पर act कर सकता है, and it increases the segmentation and it increases the tone and spasm of the pyloric, ileocecal, and anal sphincters, right? And it decreases in the GI secretion. Absorption is increased due to stasis. Central action causing inattention to defecation reflex is also seen. No tolerance develops to this action. Addicts remain chronically addicted. राइट. तो कॉन्स्टिपेशन अगर होगा तो इसके भी टॉलरेंस नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन वुड बी इंक्रीज्ड, राइट. ये सिम्टम कभी भी रिलीव नहीं होगा. सैक्रम वुड बी प्रोड्यूस पोटेंटली गाइस. सो ये बात हम कर चुके हैं. रेस्पिरेटरी डिप्रेशन वुड बी मोर मार्क्ड, राइट. सो सीओपीडी, एस्थमा, कोर पल्मोनरी, लीवर, किडनी डिसऑर्डर्स के अंदर दिस इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, राइट. एंड morphine is also contraindicated if there is any head injury. Oh. And death is generally occurs due to the respiratory failure. Then euphoria is produced, prominent calming effect, loss of apprehension, feeling, detachment, and rapid IV produces kick and intensely pleasurable. And meiosis produce करता है acute morphine poisoning के अंदर, pinpoint pupil is produced. तो हमने बात करी थी head injury के अंदर morphine is why morphine is contraindicated because of the two reasons. First of all, head injury के अंदर if there is a stroke or if there is a hemorrhage, what so basically क्या हो रहा है, अगर देखो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो गया तो CO2 वुड बी इंक्रीज, CO2 इंक्रीज होगा तो ब्लड वेसल्स वुड बी डायलेटेड, ब्लड वेसल डायलेटेड होगी तो ये वाली कंडीशंस एग्रीवेट होंगी. CNS ब्लड वेसल्स डायलेट होंगी तो कंडीशंस वुड एग्रीवेट, सिम्टम्स वुड एग्रीवेट, क्राइसिस में चला जाएगा पेशेंट. प्लस दूसरा कंडीशन ये है कि इट कैन प्रोड्यूस द पिन पॉइंट प्यूपिल. तो हेड इंजरी है, सो हेड इंजरी के अंदर हमें देखो हमें इंप्रूवमेंट कैसे चेक करनी होती है. वी विल बी चेकिंग द इंप्रूवमेंट बाय सीइंग द प्यूपिल रिफ्लेक्स. तो प्यूपिलरी रिफ्लेक्स देखते हैं हम ताकि हमें पता चले कि इंप्रूवमेंट है या नहीं है. अगर इंप्रूवमेंट नहीं होगी तो प्यूपिलरी रिफ्लेक्स नहीं होंगे. बट अगर हमने मॉर्फिन दे दी, मॉर्फिन अगर दे दी तो व्हाट विल हैपन इज पिन पॉइंट प्यूपिल वुड बी प्रोड्यूस्ड. पिन पॉइंट प्यूपिल प्रोड्यूस होगा, पिन पॉइंट प्यूपिल प्रोड्यूस होगा तो देयर वुड बी नो चेंजेस. तो प्यूपिलरी रिफ्लेक्सेस जो है वो एबॉलिश हो जाएंगे और हमें पता नहीं चलेगा कि हमारी ड्रग, हमारी ट्रीटमेंट से इंप्रूवमेंट हो पा रही है या नहीं हो पा रही, राइट. एंड yeah, thank you so much that you are here, every one of you are here, and आप लोग बोर नहीं हो रहे, ये सबसे बड़ी बात है. And other actions, that is they can cause spasm of the sphincter of Oddi, intrabiliary pressure basically increase हो सकता है, and that's why it can cause biliary colic because sphincter of Oddi कहाँ होता है, bile duct और duodenum के बीच में there is sphincter of Oddi, और अगर ये constrict हो गया तो it will not let the bile to enter the duodenum, right. So bile would be accumulated in the bile duct only, and this accumulation can cause stones, right, or biliary colic, right. Tone of the detrusor or bladder sphincter is increased, causing urinary urgency, and it can also cause the urinary retention because अगर इसने ट्राइगोन ऑफ द ब्लैडर को कंस्ट्रिक्ट कर दिया देन यूरिनरी रिटेंशन हो जाएगा. बट अगर ट्राइगोन नहीं हुआ कंस्ट्रिक्ट देन no problem. And may prolong labor, it can prolong the labor, it can cause bronchoconstrictions due to histamine release, then contraindicated in COPD, asthmatics, etc. And guys, heavy abusers के लिए basically loss of libido, impotency and menstrual irregularities is also seen.
can fall in BP, bradycardia, and it lowers the seizure threshold as well. So there can be fall in BP, there can be bradycardia, there can be lower seizure threshold, right? And sedation, adverse effects are basically sedation, mental clouding, lethargy, constipation, respiratory depression, blurring of vision, urinary retention, allergic reaction, urticaria, swelling of lips, and there is apnea of the newborn, and we can also, and there would be बेसिकली अगर apnea of the newborn is there, mother labor के अंदर आपने अगर दे दी morphine, then immediately you have to give naloxone 10 mg through the umbilical cord. You have to inject the naloxone through the umbilical cord. Otherwise अगर एक बार मॉर्फिन ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके फीटल के ब्रेन में कंसंट्रेशन जनरेट कर लेगी, so that would be a serious condition, right? एक्यूट मॉर्फिन पॉइजनिंग की अगर हम बात करें तो 50 mg IV, 50 mg IM, अगर हमने 50 mg IM से ज्यादा दे दी तो इट कैन प्रोड्यूस टॉक्सिसिटी. देन स्टपर, कॉमा, फ्लैसिडिटी, साइनोसिस, occasional breathing, pinpoint pupil and convulsion. These can be the effects that can be, these are the symptoms that are produced after the acute morphine poisoning. Stupor, coma, flaccidity, cyanosis, occasional breathing, pinpoint pupil and convulsion. And it is indicated, basically जो इसका ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट प्लान क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटेन द आईबीसी, देन डू द गैस्ट्रिक लेवेज एंड स्पेसिफिक एंटीडोट इज naloxone, राइट? हाँ. Then tolerance is generated. Due to the tolerance, the person keeps on increasing the dose, because वो euphoria वाला effect चाहिए होता है, but tolerance does not develop to the 3 C's. कॉन्स्टिपेशन के लिए कोई टॉलरेंस डेवलप नहीं होती, कंस्ट्रिक्शन ऑफ यूपिल के लिए कोई टॉलरेंस डेवलप नहीं होती, कन्वर्जन्स के लिए कोई टॉलरेंस डेवलप नहीं होती. एंड डिपेंडेंस की अगर हम बात करें तो साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बोथ डिपेंडेंस कैन बी प्रोड्यूस्ड. सो पर्सन कैन फील क्रेविंग प्लस पर्सन कैन फील विड्रॉल सिम्टम्स एज वेल, राइट? And secondly, absolute contraindications are head injury. Head injury as progressive respiratory depression, respiratory acidosis में चला जा सकता है patient, CO2 बढ़ सकते हैं, and vasodilation, and CO2 can increase, CO2 can induce the vasodilation and thus intracranial tension increase हो सकती है. प्लस प्यूपिल रिमेन्स म्योटिक, बेसिकली पिन पॉइंट रहेगा. सो पेशेंट रिकोमाटोज है कॉन्स्टेंटली, तो हमें उसका ट्रीटमेंट देखना है कि इज इट, हमारा जो ट्रीटमेंट है उसका बेनिफिट हो भी पा रहा है पेशेंट को या नहीं हो पा रहा. सो पेशेंट को कैसे बेनिफिट, हम तो वी विल बी लुकिंग आफ्टर प्यूपिलरी रिफ्लेक्सेस. बट अगर हम मॉर्फिन दे देंगे, प्यूपिलरी रिफ्लेक्सेस जो है वो एबॉलिश हो जाएंगे, एंड दैट्स व्हाई एबॉलिश हो जाएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि जो मेन थिंग है, जो हमारी ट्रीटमेंट, जो हमारी डोज, जो हमारी थेरेपी है, उसका यूज आ भी रहा है या नहीं आ पा रहा, राइट? Then we are having codeine and folcodeine. So they are cough suppressants, sub-analgesic doses per dose. Cough, basically dry cough or antitussives. Constipation is major side effect at higher doses. Pethidine may cause convulsions on the chronic use. Why? Why it can cause seizures? Basically क्या होता है कि pethidine 99% is degraded by the MAOA inhibitor, MAOA enzyme, right? तो अगर कोई पेशेंट MAOA inhibitor ले रहा है, MAO और स्पेसिफिकली A इनहिबिटर ले रहा है, राइट, राइट, तो व्हाट विल हैपन, तो पेथिडिन का सारा ट्रांसफॉर्मेशन नॉरपेथिडिन में कन्वर्ट हो जाएगा, और नॉरपेथिडिन इज एलिप्टोजेनिक, एंड या तो क्रोनिक यूज पर एलिप्टोजेनिक प्रोड्यूस हो सकता है, और इवन ऑन द सिंगल डोज अगर एमएओ इनहिबिटर के साथ पेथिडिन दे दी, देन इट कैन प्रोड्यूस सीजर्स इवन ऑन द सिंगल डोज एज वेल, राइट? Now comes the tramadol and tapentadol. These are the potent analgesic drugs that are basically used. So tramadol and tapentadol alpha, no, mu, kappa and delta receptors को ये agonist है and potent है. So it increases the 5-HT and Na in the spinal cord and used as analgesic, and it can be used as anesthesia as well, right? And fentanyl, alfentanyl, sufentanil, remifentanil, they are highly soluble, lipid soluble drugs, and they cause post operative muscle rigidity. एंड गाइस यहीं पर मैं आपसे एक और बात पूछूंगा कि पोस्ट ऑपरेटिव मसल पेन किसकी वजह से होता है? सो सक्सिनलकोलिन इज द ड्रग दैट कैन कॉज पोस्ट ओपी मसल पेन, राइट? Second is opioid partial agonist. So buprenorphine is the drug, basically opioid partial agonist. So basically सब maximal response produce होगा, highly lipid soluble है, low intrinsic activity, ceiling effect lower होंगे, low degree of tolerance is seen, low dependence is seen.
लॉन्ग लास्टिंग पेनफुल कंडीशंस लाइक कैंसर पेन के अंदर ये यूज होता है बिकॉज डिपेंडेंस इतनी जल्दी नहीं डेवलप होती। प्री मेडिकेशन एंड पोस्ट ऑपरेटिव एमआई के अंदर इट इज यूज्ड ट्रीटमेंट ऑफ मॉर्फिन डिपेंडेंस एज एन ऑल्टरनेटिव टू मिथाडोन बिकॉज इसका जो टॉलरेंस है डिपेंडेंस है नहीं आ पाती एंड इफेक्ट्स भी लोअर है। सो उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस होगा और पेशेंट को उतने ज्यादा विड्रॉवल सिम्टम्स नहीं आएंगे, राइट। But it is not suitable for use during the labor pains. हाँ, so now comes PNB bank वाली drugs, opioid agonist, antagonist. Agonist is on kappa, antagonist is on mu, right? Uh, so pentazocine is the drug. Pentazocine basically tachycardia and it increases the BP as well. It may increase the cardiac load as well. So it is contraindicated in MI and ischemic heart disease. Biliary spasm, constipation are less marked and it is indicated for the post-operative and moderately severe pain, burn, trauma, fracture and cancer. And adverse effects की अगर मैं बात करूँ तो dysphoric psychomimetic effects and hallucinations. ब्यूटोरफेनॉल की अगर मैं बात करूं तो मार्क्ड सिडेशन ऑल इफेक्ट सिमिलर टू पेंटासोसिन and it is indicated for post-operative and painful conditions. So it is also contraindicated in MI and ISD, but nalbuphine is safer in the MI patients, right? So nalbuphine can be given in the in the MI or IHD patients. Nalbuphine does not cause any sympathetic stimulation, no cardiovascular effects, so safer in MI patients. And indicated in the post-operative and severe painful conditions, right? And adverse effects are basically hallucinations, right? It's already 10:41, and yeah, we'll be completing these things before 11. हाँ, so before 11 हम खत्म कर देंगे सब कुछ। Opioid antagonist की अगर मैं बात करूँ तो naloxone and naltrexone, these are the two drugs. Naloxone is basically antagonist on the mu kappa and delta. Injection है, IV injection is prescribed, orally active नहीं है ये, right? So 0.4 to 0.8 mg per kg is the therapeutic index, right? Therapeutic range at which all the effects are or antagonization is produced. So orally it is inactive. High first pass metabolism is their glucuronidation and indication and drug of choice for the acute morphine poisoning, reversing the neonatal asphyxia due to the opioid use of labor. Very short duration of action is there. Naltrexone की अगर मैं बात करूं तो orally active long duration of action indicated in maintenance of the opioid poisoning. Alcohol craving is also reduced naltrexone की वजह से. Then adverse effects nausea, headache and hepatotoxicity at the higher doses. तो गाइज अब मैं बात करता हूँ कि ओपियोइड डी एडिक्शन कैसे करना है। सो देयर इज शॉर्ट टर्म एडिक्शन एंड देयर इज ट्रीटमेंट फॉर लॉन्ग टर्म एडिक्शन। शॉर्ट टर्म एडिक्शन अगर है देन स्टॉप द ओपियोइड्स राइट अवे एंड विड्रॉल सिम्टम्स विल बी प्रोड्यूस्ड। सो उसके लिए आप सिंपैथेटिक सिम्टम्स अगर है, ट्रेमर्स है, बीपी बढ़ गया, सो यू कैन गिव बीटा ब्लॉकर्स एंड क्लोनिडिन फॉर दैट। प्लस अगर ऑपोजिट एक्शन टू ओपियोइड है लाइक सीएनएस ओवर एक्टिविटी हो रही है, सो यू कैन गिव बेंजोडाइजेपिन्स, राइट। And if there is long term addiction, then replace with the methadone and it is less addictive, long acting, less euphoria is produced, reduce dose gradually and then stop. तो methadone के साथ replace कर दो because it is a longer acting, then उसके बाद naltrexone दे दो for the relapse prevention, right? Naltrexone is orally active. So with this I think we are finished. We have finished the sum up session finally. Sum up session is finished and this thumbs up is for me guys, thank you so much. मैंने खुद को थम्स अप दे दिया। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं करा तो जाके वीडियो को लाइक तो कर दो एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल आल्सो, दिस चैनल एंड कमेंट भी करके बताओ। और अगर कुछ पूछना हो तो भी आप कमेंट कर सकते हो, मैं एक बार क्लास से पहले कमेंट देखकर आ जाऊंगा। सो कल हम एमसीक्यू करेंगे, कल 12 PM पर वील बी डूइंग एमसीक्यू। तो हमने हमारा टारगेट था 100 एमसीक्यूज करने का बट हमने सिर्फ 52 एमसीक्यूज ही करे थे। सो मैंने सोचा था एक टाइम स्पैन 1 आवर 30 मिनट्स का। सो 1 आवर 30 मिनट्स के अंदर हमने 52 एमसीक्यूज ही कर पाए थे बट अब हम थोड़े से ज्यादा कर पाएंगे। मैंने सोचा था 1 आवर 30 मिनट्स में वी कैन डू 100 एमसीक्यूज इजीली बट थोड़ा सा स्लो हो गया था प्रोसेस बीच में। हाँ, कल 12 बजे हम फिर से लेंगे। सो आई एम हैविंग अराउंड 400 एमसीक्यू, सो 52 हुए हैं बट हम बहुत ही जल्दी खत्म कर देंगे। सो इफ यू वांट टू
buy the plus subscription, then you can use the code VIRMANI Virmani and you can get the 10% off. And thank you so much for coming, guys. Thank you so much. Thank you so much for being here with me, for tolerating me. Thank you so much. कल हम दोबारा से मिलने वाले हैं 12 बजे and tomorrow we are having 3 classes again and tomorrow finally we are starting CVS. So thank you so much, guys. Let's end this session and let's end